invested in ourselves. A few tips on how we can do that. If you have cell phones, I would request you turn them to flight mode so that even the vibrations of the cell phone do not disturb you. That will make sure that your entire attention and the actual vibrations that you receive are not from the mobile phones, but the energy from the room over here. So let's make sure that we turn our phones on silent or we turn them on flight mode. A second very important tip that's going to be very helpful for each and every one of us here is grounding ourselves. Now I know we are sitting on chairs, but if possible, and highly recommended, if you can remove your shoes and allow your feet to touch the ground. What this does is it allows us to touch, to connect with the earth element, and in a way, connect with the nature. So 2 very important and simple tips is 1, put your phone on flight mode, please. And the second one, let's remove our shoes, highly recommended. If you can, please do that. And then use your feet, ground them on the floor, and just experience. Third, very basic and most important tip is allow yourself to experience every single flow of energy from all the beautiful collective souls that we are here and from our Himalayan saint over here. Allow yourself to experience that, enjoy that, and embrace that. So, each and every one here has a movie, right? We are the stars in the movie of our lives. Everyone is a superstar. Everyone is the main character. Now what happens is sometimes these characters could get stressed in the hustle and bustle of our lives, maybe due to school, maybe due to studies, maybe due to work at home, or maybe due to a combination of all of these. It's also possible that we do not experience this, but there's still somewhere we are looking for some kind of calm, some kind of peace, some kind of that, oh, this feels nice, that feeling. So what do? We try to find some time with our friends and family. We try to go on dinners. We try to go on dates with our people that we love with. We try to go on vacations, maybe somewhere abroad, and we love that. We go in nature, we enjoy that. And we feel that calm, we feel that peace, and we feel that beautiful, amazing feeling, and that amazing feeling is amazing, right? But then we come back. The main character of our story comes back to where we were, and the story resumes. Then the main character goes through everything, and then there's again another need to go on a vacation, or perhaps a staycation, or perhaps another dinner with friends and family. So what's happening in this main character? It's trying to find peace. Every time there's some kind of need for a peace, and it tries to do that. Either going on a vacation, or all of the combination that we talked about. Now what if, along with this main character, there's this beautiful energy that allows the main character to experience this peace, this bliss, this happiness, every single time that the entire movie is playing. That peace is with you every single time. It's within you. How does that sound? Does that sound like a great feeling? To have that peace, that sense of balance, that sense of calm, everywhere we go. Yes, 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 with smiles. I see nods, I see smiles. Yes, so that's what we are going to experience here today. And that's what our Himalayan saint, His Holiness Shivkrupanand Swamiji, is going to introduce to us how to find that inner peace, how to find that inner calm, inner balance, and carry it with us wherever we go. So this main character is always this happy, blissful, peaceful character. So today, we will have a session with the Himalayan saint, His Holiness Shivkrupanand Swamiji, a global peace and wellness ambassador who spent his years in Himalayas and brought meditation to all of us in the society, and the meditation is now practiced across 70 plus countries across the globe. So in a few moments,
we'll look at an introduction video, and then we'll invite His Holiness Shivkrupanand Swamiji to grace us with his words of wisdom. 3 important tips: phone on flight mode, feet grounded, highly recommended if you can take off your shoes, and the most important, allow yourself to be completely immersed in this particular session. Be present and just experience what you're going to experience. All right? Let's look at the video now. Thank you very much for your attention. This is familiar to you. Every day is a chase for the next moment, the next client, the next dateline. Stopping in the midst of all seems far-fetched. But this is often a sign to bring back some balance into our lives. Most of us live our life using the senses of our physical body. Within ourselves lies an entire system which, when used, can help us experience inner peace while living our current lives. When the fetus is 4 months old in the mother's womb, a life force called Kundalini enters the womb. It enters the child's body from the crown, and after energizing all the 7 chakras, it settles at the triangular base of the spine, and there lies dormant. If this life force is awakened, it rises upwards and remains firm at the crown of the head, and then has a capacity to absorb the energy of the entire universe. There are 7 energy centers in the central part of the human body called chakras. The task of supplying life-giving energy to the body and throwing out the impure energy is carried out by the chakras. Meditation clears and develops chakras as a result of energy flow. The Muladhara or base chakra is located at the base of the spine and is the foundation of our body. Weakness in Muladhara chakra invites diseases like cancer, piles, AIDS, and sexual-related problems. One can strengthen this chakra by remaining in contact with the earth element. Here you have to be totally receptive, like a small innocent child. The Kundalini energy is feminine power. Being aware and respectful of the divine power in all women also strengthens this chakra. The Swadhisthana or sacral chakra is located at the pubic area and is related to thoughts. Excessive thoughts lead to diabetes. You can control this through regular meditation and by starting to observe your thoughts every hour. If you save this energy, you will increase your efficiency. The Nabi or navel chakra is related to one's satisfaction in life. When this is blocked, stomach ailments occur. To purify this chakra, one has to divert his or her attention to others' problem instead of their own. This chakra is also associated with a spousal relationship. If the relationship is happy, strong, and satisfied, then this chakra acts as a base for your spiritual progress. The Hriday or heart chakra is located at the center of the heart. This chakra is based on full faith on the divine energy. Malfunctioning of this leads to problems like high blood pressure and heart problems. This chakra is associated with the relationship one has with his or her parents. One has to keep their parents happy and satisfied to progress on from here. The Vishuddhi or throat chakra plays a very important role because it stands for the success in our lives. When this chakra doesn't function properly,
it leads to throat problems. To develop this chakra, you have to firmly believe that there is only one supreme consciousness and that all external religions lead to one. This chakra is also associated with the relationship one has with his or her siblings. If there is a good relationship with them, you will attain success in life. The Agya or third eye chakra is also called the master's abode because only a living, highly developed divine master can raise Kundalini from Agya chakra to the next chakra, the Sahasrara chakra. When this chakra stops functioning, then a person suffers from problems related to the head. Lack of forgiveness in your mind for others can block this chakra. One has to forgive all in order to develop this chakra. The topmost chakra at the crown of the head is the Sahasrara chakra. If you consider our body to be a temple, then the main door is the Sahasrara chakra. The soul and the universal consciousness meet at this chakra. We cannot reach this chakra without the proximity of a guru. We can become unbalanced if this chakra is spoiled. There are three most important nadis in our body. When we are affected by the past, we are in the Chandra Nadi, the lunar channel. Thoughts of the past flows your energy towards Chandra Nadi. This leads to worry, stress, and a depressive personality. When we are affected by the events of the future, we are in the Surya Nadi, the sun channel. Future thoughts flows energy towards Surya Nadi. This leads to egoistic, angry, focused, very active, and a daydreaming personality. When we are in the present, we are in the Madhya Nadi, the central channel. Present thoughts flows energy to the central nadi. This is when we're connected to universal energy. The aura is an electromagnetic field that exists around our body. It is made up of different colors according to the state of a person and can reveal a lot about him or her. This is being checked through Kirlian photography. Our physical health, personality, mental state, attitudes depend on our aura, and it fluctuates as per our thoughts. A good aura will always protect us wherever we go, and people will find it nice to be with us. I was recommended meditations by a friend. In less than 3 months, meditations becomes my medicine. There's no allergy, no side effect, no drowsiness, no overdose. I can control the dosage myself. I can have once a day, twice a day, or 3 times a day. There's no restrictions, and I can do it anytime, anywhere. Slowly, when I meditate regularly, I kind of understand something that everybody have a devil and an angel. And I come to know that devil is called our ego, and that angel is our soul. As if there's constantly a bright shining light within me, which is independent of the outward circumstances. What I love about this path is that we can stay in society while we progress spiritually, which means we don't have to leave our families, our work, etc. We just stay here, and by continuously meditating, we realize who we really are. We realize slowly that we are a beautiful soul, which is part of the divine consciousness. This gave me lots of tools to suffer less, suffer better, and enjoy life from my soul. Overall progress, you can say, in every aspect of my life, whether it's overall well-being, whether it's financial situation, whether it's success in job, whether it's love. In every respect there is progress, and the most important of all, because all of these things are only byproducts of meditation,
the most important is development of the soul, to identify oneself not with the body but with the soul. Through this connection with my soul, I get the guidance what I should do and what I should not do. And I feel that more and more and more satisfaction is coming into my life. Nowadays my life is extremely different. I'm so grateful to find this meditation, to find that kind of relationship with my soul. His Holiness Shree Shivkrupanand Swami, better known as Baba Swami, is an Indian spiritualist and author. Since 1994, he has been relentlessly conducting meditation programs all over the world that have brought a magnanimous positive change in the life of thousands of people. These meditation workshops are open for all people, irrespective of their country, gender, religion, race, language, caste, or any other differentiating factors. His Holiness Shree Shivkrupanand Swami was felicitated on the 6th of June 2019 by the Prime Minister of Nepal, Mr. K.P. Sharma Oli, at the inaugural function of the Himalayan Travel March 2019 in Kathmandu, Nepal. He has been appointed as the Tourism Goodwill Ambassador, Visit Nepal Year 2020. In this regard, Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji has written a letter of appreciation and praised Swamiji's innate spiritual nature and selfless service for mankind. Shree Shivkrupanand Swamiji has also received letters of appreciation for his work from the former Indian President, Honorable Mrs. Pratibha Patil, and from the Ayush Ministry for conducting a meditation program for parliamentarians in New Delhi. He has also been appreciated by the German consulate as well as the Prime Minister of Sri Lanka for his work in Germany and Sri Lanka respectively. In 2018, the Shirdi Sai Baba Sansthan Trust invited Shree Shivkrupanand Swami to conduct an 8-day mega discourse in Shirdi, India. Swamiji says that his service in society commenced with the work that was assigned to him by Shirdi Sai Baba in 1998. After 20 years, as a thanksgiving gesture, Swamiji had the opportunity to conduct this discourse in Sai Baba's own land, Shirdi. Thousands of people from all over the world attended and benefited from this event. Swamiji says that this was the best mega event he has ever conducted. In almost all of his discourses, Swamiji has been teaching us about creating a strong and positive aura. The aura is an energy field, one's personal world that is created through regular meditation. In 2016, Swamiji got his aura report done at the Aura Clinic in London, UK. This report showed Swamiji's violet and white-colored aura, which represents a very high meditative state, the continuous receiving of universal energy, and selfless healing for those who come into his proximity. People feel peaceful and calm in his aura. This is yet another proof of how someone can progress spiritually and maintain such a state whilst living in society. Spiritual journey. Swamiji had been a spiritual seeker since his childhood. He wanted to know who God was. Whenever he went into a deep meditative trance whilst chanting mantras, he would get the vision of 3 images consecutively. The first vision was that of the Pashupatinath temple in Nepal. The second, of an ascetic who was 6 feet tall, fair-skinned with blue eyes, who had a long white beard. The third vision was of the temple of Lord Shiva on a hillock. These visions turned into reality when one day Swamiji was in Kanpur for work and got a few days off due to a bank strike. Since Kanpur was close to Nepal, he decided to go and visit the Pashupatinath temple. When he reached there,
he was surprised to find an elderly gentleman waiting for him. This man took him to a village called Shibu at the foothills of the Himalayas. It was here that Shree Shivkrupanand Swami met Shiv Baba, the ascetic he used to see in his visions. He was Swamiji's first guru. Shiv Baba mentioned that he had been waiting for Swamiji for 40 years. And during this encounter, he transferred all of his spiritual knowledge to Swamiji. This commenced Swamiji's yogic meditational practice called Samarpan meditation. Swamiji returned to India from Nepal and continued with his regular life. He then got married and had his first child. When his son was 18 months old, another guru came to his house and took Shree Shivkrupanand Swami back to the Himalayas. There, he met more sages, ascetics and yogis such as Kaivalya Kumbhak yogis, fakirs and Jain munis who shared their spiritual knowledge with Swamiji. All these Himalayan Gurus said one thing in common, that Swamiji was like a huge cauldron known as handa in Hindi, that would absorb all the knowledge and energy which various gurus wanted to transfer. Each guru bestowed him with all their knowledge and then sent him to another guru. After receiving from the Himalayan masters, Shree Shivkrupanand Swami realized that the path to liberation, moksha, was through the continuous spiritual practice of meditation. And this needed to be made available to each and every one in the world. He therefore returned from the Himalayas and started teaching the values and method of Samarpan meditation. Swamiji's wife was his very first student and is also his greatest supporter. He often says, "There are only two places of worship in my life. My first guru, Sri Shiv Baba, who sowed the seed of spirituality in me, and my wife, who nurtured me like a gardener and helped the seed grow into a tree." His Holiness Shree Shivkrupanand Swami, a spiritual master, a family man who represents the ordinary man, says that the divine purpose of his spiritual journey is to show us that even a common householder with usual responsibilities can lead a spiritually evolved life. Very soon, His Holiness Sri Shivkrupanand Swamiji and Her Holiness Guruma will be gracing us with their presence. In the meantime, let's allow ourselves to be in the present. Let's all close our eyes. Let's all leave any thoughts, anything that we've maybe come with, let's all leave it in the past. Let's allow ourselves to be in the present. A great way to do that is bring a wide smile on your face, a beautiful smile on your face, a mental note to yourself to just be here in the present, to embrace the love and the energy that we are about to receive, and to just enjoy the energy and the vibrations. There's a beautiful music in the silence. Let's find that. Let's enjoy that music. Let's be in tune with ourselves.
We welcome Her Holiness Guruma. Thank you for gracing us with your presence. In a few moments, Swamiji will be here. Today's discourse by Swamiji will be in Hindi, but it will be translated live in English with a live translator. So we'll have Hindi discourse immediately followed by English translations. Let's remember the 3 points. Phones on flight mode, allowing yourself to be in the present moment, and feet grounded. If you're wearing shoes, request you to take off your shoes, feet on ground, and just be in the present. Allow yourself and embrace and be in the present. On behalf of everyone gathered here today, I shall request Swamiji to shower us with his blessings through the medium of words. Gurudev, Krupya Amrut Barsaye. Gurudev, Krupya Amrut Barsaye. Gurudev, Krupya Amrut Barsaye. आए हुए
सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। My salutations to all those gathered here today. पिछले 2 दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि हिमालय का रास्ता वन वे है, जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। For the last 2 days, I have been telling you that the path to the Himalayas is one way. Those who go there do not return back into society. यही कारण है कि योग का ज्ञान जो वहाँ है वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। And this is the reason why the knowledge of the yoga which is present there has not been able to reach here. तो आपको मन में 2 दिन से प्रश्न आ रहा होगा, फिर मैं कैसे आया? So you may be having this question in your mind for the last 2 days. So how have I managed to come back? और हमारे के गुरु को इस समाज की आवश्यकता क्या पड़ी? आपके मन में प्रश्न आएगा कि हिमालय के गुरुओं को इस समाज की आवश्यकता क्या पड़ी? Then you may have this question that what need did the gurus in the Himalayas have of the society? हिमालय के गुरु ने मुझे क्यों समाज में भेजा? Why have the gurus of the Himalayas sent me into society? क्या ऐसा था जो समाज में हो सकता है वो हिमालय में नहीं हो सकता? What is that can happen in society that cannot happen in the Himalayas? कोई तो उद्देश्य होगा ना। There must be some objective, some purpose. आज उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। Today I will talk about that purpose. एक बार Once, मैं बुद्धिस्ट साधुओं के साथ बर्मा बॉर्डर पे गया था। once I went to the Burmese border with some Buddhist monks. और बर्मा बॉर्डर से हम जब वापस आ रहे थे ना, तो वापस आते समय खूब घना जंगल है। So when we were returning from the Burma jungles, at the borders, there was a very dense forest there. और जंगल में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। There are big caves in that jungle. उन गुफाओं के अंदर कई जगह बुद्धिस्ट साधु ध्यान करते बैठे रहते हैं। In many of these caves, many times there are some Buddhist monks who are there meditating. और उनकी साधना भी विलक्षण है। उनकी साधना भी थोड़ी विचित्र है, अलग है। And their spiritual practice is very different. वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े पत्थर को लेते हैं और उसके बाद में दिन में केवल एक छेनी चलाते हैं। So they take a stone and during the whole day, each day, they just chisel it once, they just hit it once. और ये एक छेनी चलाना उनके साधना का भाग है। And this is a part, by hitting it once a day, this is a part of their spiritual practice. 20-20 साल में 25-25 साल के अंदर वो एक मूर्ति का निर्माण करते हैं। And after 20 to 25 years, they will create a statue. वो साधु कोई मूर्तिकार नहीं है, तो कोई मूर्ति अच्छी बनती होगी ऐसा नहीं, लेकिन एक कुछ तो एक मनुष्य की आकृति बन जाती है। Those monks are not sculptors, and therefore it is not that they create a perfect sculpture, but it resembles a human form. और वो कल्पना करते हैं कि हम बुद्ध की प्रतिमा बना रहे हैं। And when they create it, they imagine that they are creating a statue of Buddha. तो ऐसे वो दिखने को तो बुद्ध जैसा नहीं लगता, लेकिन उसके वाइब्रेशंस खूब जबरदस्त रहते, खूब ज़्यादा रहते। So it doesn't look like the statue of Buddha, but the vibrations are very strong. ऐसे हम जब जा रहे थे ना, तो एक गुफा में से ऐसे खूब जोर से वाइब्रेशंस आ रहे थे, खूब ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे थे। So as we were traveling around, we found that at the mouth of one cave, there were very strong vibrations being felt. तो रात होने को थी, अंधेरा होने को था, हमने सोचा चलो इस गुफा की तरफ जा कर के रात गुजारी जाए। So it was dark and about to be night. So we decided to go inside the cave for rest. और हम लोगों के पास ना एक जड़ी बूटी रहती है, वो जड़ी बूटी को अगर जलाया था, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो ना, ऐसी वो जड़ी बूटी जलती। So we had some twigs and herbs that when we light those, they lit like a candle. तो उससे आके हमने गुफा में आग जलाई और जैसे जैसे रात गुजारी। So we came into the cave and we lit them and somehow we passed the night. और उसके बाद में सुबह देखा तो उस गुफा से कई गुफाएं और जुड़ी हुई थी। So in the morning when we looked around, we saw that that cave was connected to many other caves. तो उसमें से एक गुफा में से खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, खूब अच्छी एनर्जी आ रही थी। And within that network of caves, we found that one particular cave
there was very strong vibrations coming from it. जैसे ही हम अंदर गए ना तो देखा तो 2 युवा साधु वहाँ ध्यान करते बैठे हुए थे. And just as we entered it, we saw that there were 2 young उनके yogis इतने who were वाइब्रेशंस थे meditating. कि उनका शरीर भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था. And their meditation was so strong that we were not even be able to see their bodies clearly. और वो जो 2 बुद्ध साधु मेरे साथ थे ना, उनको किसी फंक्शन में जाना था तो वो बोले हम तो यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं. तो वो मुझे छोड़ के चले गए. So the 2 monks who were with me, they had to go to another function, and they said that we are not able to stay here, wait here anymore, we have to move on. उसके बाद में मैं वहाँ पे कुछ दिन रहा. So they left and I stayed there for a few days. और जब वो साधुओं के फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच हुई ना, तब उन्होंने कहा तुम आए नहीं हो, तुमको यहाँ बुलाया गया है. So when my energy, the frequency of my energy matched the frequency of those saints, then I was connected to them. I was able to communicate with them. तो मैंने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा गुरुदेव जिस उद्देश्य से आपने बुलाया मैं अपने आप को उसको समर्पित कर रहा हूँ. And they said that you have not come here, we have called you. So I prostrated before them. आपकी जो आज्ञा है वो आप मुझे बता सकते हैं. And I said that I surrender myself to your work, whatever purpose you have called me here for, I उन्होंने surrender कहा myself. कि हम पिछले 800 सालों से यहाँ ध्यान करते बैठे हैं. And they told me that they have been meditating there for the last 800 years. और हम राह देख रहे हैं कि हमारे गुरु का आगमन इस धरती पे हो. And we have been waiting for a time when our gurus can arrive back on earth. लेकिन हमारे गुरुओं को जन्म देने के लिए अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे. But our gurus have not found suitable parents so that they may take birth on this earth again. तो हमारी इच्छा है कि आप समाज में जाओ और समाज में जाके अच्छे माँ बाप का निर्माण करो ताकि हमारे गुरु इस धरती पे अवतरित हो सके. So it is our wish that you go back into society and you help create suitable parents so that our gurus can take birth again. तो मैंने मेरा सारा जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए लगा दिया. So I have surrendered my full life for this one purpose. मैंने उनको आश्वासन दिया मैं समाज में जाके ये कार्य करूँगा. And I assured them that I will go back into society and do this work. इसी कारण समाज में आना पड़ा. And this is why I had to come back into society. और समाज में आने के बाद में अच्छे युवक को अच्छे युवतियों को तैयार करते हैं. तैयार करके ध्यान का उनका उच्च स्थिति जब हो जाता है तब उनके माध्यम से जब उनकी शादी होती है तो उनके माध्यम से जो बच्चों का जन्म होता है उसमें वो गुरु आने वाले. So I came back into society and I taught meditation to the youth, the young girls and the young boys. And when they get a good state, spiritual state, and when they get married, they get to a higher spiritual state. And through them, through their medium, the gurus will be born. आप थोड़ा सोचो ना ये मिशन कितना बड़ा है, कितना कठिन है. Just think about how vast this mission is and how challenging it can be. लेकिन ये नामुमकिन नहीं है. But it is not impossible. कुछ गुरु इस धरती पे अवतरित भी हो चुके. There are some gurus who have already taken birth on this earth. लेकिन अभी वो छोटे छोटे हैं. But they are still young at the moment. अभी उन्हीं को संरक्षण की आवश्यकता है. At the moment, they require protection. आगे जाके योग का प्रचार प्रसार वही करेंगे. And in the future, they will be the ones spreading the work of meditation. ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनको आमंत्रित बच्चे बोलते हैं. These children are called invited children. देखिए माता पिता पास आ गए और पास आने के बाद में इच्छा हो न हो तो भी बच्चा हो गया उसको अतिथि बच्चे बोलते हैं. Look, when two people come together physically, when parents have physical relations, and then whether they want it or not, and a baby is born, then that baby is called a guest baby. और आमंत्रित बच्चे से आशय माँ बाप अपने दोनों की ध्यान की स्थिति अच्छी करें. ध्यान की स्थिति अच्छी करने के बाद में उन गुरुओं को आमंत्रित करें कि आप मेरे घर पे अवतरित हुई. And by invited children, I mean that those parents, they meditate regularly, they improve their spiritual state, and after reaching a good spiritual state, they invite those gurus that please take birth in our home. And then those gurus are born. माता पिता का चुनाव वो गुरु स्वयं करते हैं. And those gurus themselves choose the mother and father that they want to be तो born. जब उनके फ्रीक्वेंसी के साथ माता पिता की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है ना तो वो उनके घर जन्म देते हैं. And when their frequency matches the parents' frequencies, then they will be born in that home. अब आप बोलोगे हम तो बूढ़े हो गए हम क्या काम के. अरे काम के नहीं, तुम माँ बाप नहीं बन सकते, नाना नानी बनो, दादा दादी बनो, कुछ तो बनो.
And now you will think that we are old, and so what use are we? You are of use. You may not be able to become parents, but you can be able to become grandparents of such gurus. अब देखो ना, एक सामान्य कार भी हम खरीदने आते हैं, स्कूटर भी खरीदने आते हैं, दुनिया भर का इंक्वायरी करते. So just think about it, that even when we go to buy a motor vehicle or a scooter, we inquire about its history. वो कंपनी कैसी है, कितना एवरेज देती है, दुनिया भर का पूछताछ करते. We find out a lot of information about it, of what company it is, what type of brand it is. लेकिन बच्चे के आगमन के दफे ऐसा कोई विचार नहीं करते. But when we are inviting the children, the babies are born, we are not making any such inquiries. जबकि वो आपका भविष्य है. When these children are your future. तो आवश्यकता है एक अच्छी स्थिति. देखिए, अच्छे किस्म के आम तो चाहिए, लेकिन अच्छे किस्म का बीज लगाओगे तो अच्छे किस्म के आम आएंगे ना. So it is important for a good state. Look, if you want a good quality mango, then you need a good quality seed. तो अतिथि बच्चे नहीं, आमंत्रित बच्चे होना चाहिए. So your children should not be guest children, they should be invited children. तो एक भी अगर आमंत्रित बच्चा होता है ना, वो आसपास के पूरे परिसर का डेवलपमेंट कर देता है. So even if one invited child is born, then that through the medium of that child, the whole environment, the surrounding environment improves. और ये उद्देश्य सर्व सामान्य गृहस्थ व्यक्तियों के माध्यम से ही हो सकता है. इसलिए मेरे शरीर के गृहस्थ व्यक्ति का उन्होंने चुनाव किया. And this objective can only be fulfilled by the ordinary man who is a family man, and that is why my gurus chose me. गुरु बोलते साधु सन्यासी दुनिया नहीं है, हमको सर्व सामान्य मनुष्य तक अपनी अनुभूति पहुंचाने की. So the gurus say that the ordinary man is not an ascetic or a sage or a saint. We want this knowledge to reach the ordinary man, and therefore we need someone like an ordinary man. ये बात रही हिमालय की. And this is what is. और दुनिया में आने के बाद में कैसा झटका लगा वो भी बताता हूँ. And once I returned back from the Himalayas, I will tell you how I was shocked. जैसे ही मुंबई में आए ना, आने के बाद में खूब छोटे छोटे शिविर होते थे, 8 लोगों के शिविर, 10 लोगों के शिविर. When I came back from the Himalayas, I was having some small programs in Mumbai, just 8 people, 10 people. वो शिविर के अंदर एक डॉक्टर साहब आते थे. One doctor used to come for those programs. जिन्होंने 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी. And he had written books and literature for the last 30 years on meditation and yoga. तो जब भी वो प्रवचन खत्म होता था ना, बोलते स्वामी जी आज आपने प्रवचन में तो ये कहा है, वो ग्रंथ में तो ये लिखा है. And whenever the discourse would end, the lecture would end, then he would question that, Swamiji, you have said this in your lecture, but in this book is written like this. आज तुम खूब लोगों को मिली हो क्या? तुम्हारे ट्रांसलेशन में दम नहीं आया. मैं इसलिए मना किया था कि एकांत में रहो. तो बार बार ना प्रवचन के बाद में वो प्रश्न पूछते थे. So after the discourse, he would ask questions. तो मैंने उनको एक दिन फिर हमारी ना पहचान हो गई, हमारी उनसे दोस्ती हो गई. So I became friendly with him. तो मैंने उनको कहा कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बंद करके आ सकते हो क्या? So I told him that come and visit me the next day, leave all your knowledge behind. तो वो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? And he started laughing. Why are you saying this? मैंने बोला आप आओ फिर बताता हूँ. And I told him, you come and then I will tell you. दूसरे दिन 6 बजे वो मेरे घर पे आए. The next day he came to my house at 6 a.m. in the morning. मैं ध्यान करते बैठा था, वो ध्यान करने बैठ गए. He sat for meditation. I was sitting for meditation, and he sat for meditation. और उनका 1.25 घंटे ध्यान लगा. And he went into meditation for 1 hour 45 minutes. वो बोले स्वामी जी मैं 30 साल से ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ध्यान, इतना गहन ध्यान आज तक कभी भी नहीं लगा, ऐसा क्यों? And he said to me that, Swamiji, I have been writing books on meditation for the last 30 years, but I have never experienced such good meditation. मैंने उनको पूछा तुम कार लेके आए ना? तो बोले हाँ. And I said to him that you have come with your car to meet with me, and he said yes. मैंने पूछा कार लेके सीधे घर में घुस गए क्या? And I said that have you come inside the house with your car? वो बोले नहीं, कार बाहर खड़ी करी और पैदल पैदल घर में. And he said that no, I have parked my car outside and then I have walked into the house. मैंने उनको उनका ठीक ऐसा ही पुस्तकों के द्वारा परमात्मा का अनुभूति कभी संभव ही नहीं.
And then I told him that in the same way that one cannot attain Paramatma through reading books. पुस्तकों का ज्ञान निर्जीव है, वो तुमको सजीव अनुभूति कैसे करा सकता है? The knowledge in the books is not living. How can it give you living experience? सजीव अनुभूति करने के लिए तुमको सजीव ज्ञान चाहिए, सनु अनुभूति चाहिए. To experience, to have a living experience, you need the living knowledge. परमात्मा कोई पुस्तक थोड़ी, अक्षर थोड़ी है जो पढ़ करके तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए. Paramatma, the universal consciousness, is not words that can be written in books, that you can acquire it from the books. परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है. Paramatma is the universal consciousness. जीवंत शक्ति है, वो पुस्तक में नहीं है. It is a living energy that cannot be found in books. देखो ना, जैसे हम पुस्तक के अंदर गाय का चित्र देखते हैं तो हमको गाय की जानकारी मिलती है. So when we look at the book and we see a picture of a cow, then we get information of the cow. गाय की जानकारी मिलती है, गाय सफेद रंग की, लाल रंग की, काले रंग की होती है. So we can get information about the cow, that which color it is, whether it is black or white or red. गाय को 4 पैर रहते हैं, 2 सींग रहते हैं, 2 कान रहते हैं. A cow has 4 feet, has 2 horns, 2 ears. तो कहने का अर्थ, गाय की जानकारी मिल सकती है पुस्तक से, लेकिन गाय का दूध पीने को मिल सकता है क्या? नहीं. So we can get information about the cow from the books, but can we get milk to drink? No. गाय का दूध पीने के लिए जीवंत गाय ही होना आवश्यक है. For us to get the milk from the cow, it is important to go to a living cow. बिल्कुल ठीक ऐसा ही जीवंत गुरु के बिना अनुभूति संभव नहीं है. In the same way, without a living guru, one cannot obtain living experience. कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही कर्मकांड कर लो ना, कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती. It doesn't matter how much rituals and worship you do. क्योंकि ये सब पूजा पाठ कर्मकांड ये शरीर से की जाने वाली क्रिया है. So all these rituals, you cannot, by doing all these rituals, you cannot attain Paramatma. और अनुभूति आत्मा से आत्मा की होती है. Because these are all done at the physical level. But the soul, the living experience is one of the soul. एक बार अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया. Once I took a shibir in Ahmedabad of 90 Jain monks. उसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग गच्छ के जैन मुनि शामिल थे. There were many different Jain monks from different sects who were part of that program. तो उनके जो गच्छाधिपति थे ना, उन्होंने एक मुझे लेटर लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने ना जैन धर्म के मूल ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे हैं वो पढ़े. So the head of that Jain monk group, he wrote a letter to me after the program that, Swamiji, you have studied our Jain religion, you have studied our scriptures and read our scriptures and are very knowledgeable about our religion. और वो पढ़ के उसकी बातें आपने आपकी ग्रंथ समर्पण का योग में लिखी. And after reading that, you have written about that Jainism in your Himalaya Samarpan Yoga book. मैंने वो चिट्ठी जेब में रख ली. 3 दिन का शिविर समाप्ति के बाद उनको मिलने गया. I put that letter in my pocket, and after 3 days of ending the program, I went to meet with him. मैंने उनको बताया, महाराज साहब पहली बात तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ. And I said that first of all, I am not a scholar. I don't know Sanskrit at all. मुझे संस्कृत भाषा आती भी नहीं. I don't even know the Sanskrit language. लेकिन हिमालय के अंदर 65 जैन मुनियों के साथ रहा, उनको समर्पित रहा, तो उनके अंदर का ज्ञान मेरे में आ गया. But when I was in the Himalayas, I stayed for some time with 65 Jain monks, and it became one with them. I was completely surrendered to them, and their knowledge was transferred within me. ये पुस्तक में जो ज्ञान लिखा है ना, वो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया नहीं, मैंने उनसे लिया नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया. So this knowledge that is written in the books, they have not imparted it to me. I have not received it, and it has been transferred automatically into me. लेकिन हमको ना सिर्फ वही ज्ञान मालूम है जो कोई किसी को पढ़ा सकता है, कोई किसी से पढ़ सकता है. But we are only aware of that type of knowledge that one can teach another person, and another person can learn it. मैं उस ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आत्मज्ञान की. But I'm not talking about that kind of knowledge. I'm talking about the soul knowledge. आत्मज्ञान कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई किसी से सीख नहीं सकता. The knowledge of the soul cannot be taught by someone. It cannot be learned by someone. आत्मज्ञान गुरु के आत्मा के साथ शिष्य की आत्मा समरस हो जाए तो गुरु का सारा ज्ञान शिष्य में आ जाता है. The knowledge of the soul is such that when a disciple's soul becomes one with his guru's soul, the knowledge is transferred automatically.
गुरु देता नहीं और शिष्य देता नहीं. The Guru does not give this knowledge and the disciple does not receive this knowledge. जिस प्रकार से लेबोरेटरी के अंदर एक यूट्यूब रहती है यानी एक कांच की नली रहती है जिसके 2 सिरे रहते हैं, उसमें अगर 50 ml पानी डालो तो 25 ml पानी दूसरे सिरे में चला जाता है. Just as we have the YouTube in the laboratory, when you put some water, 100 ml of water in one end, 50 ml goes to the other side. बिल्कुल ठीक ऐसा ही गुरु की आत्मा के साथ शिष्य की आत्मा समरस हो जाए तो ऑटोमेटिकली गुरु का ज्ञान शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है. गुरु देता नहीं और शिष्य देता नहीं. In the same way, when the disciple's soul becomes one with the Guru's soul, then the knowledge transfers automatically. The Guru does not give this knowledge and the disciple does not receive this knowledge. तो आत्मज्ञान वो ज्ञान है जो गुरु को अगर शिष्य समर्पित होता है तो क्या होता है, उसके आत्मा के साथ समरस हो जाता है. समरस हो जाता है तो उसका ज्ञान उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है. So the knowledge of the soul is such that when the disciple surrenders to the Guru and becomes one with him, all of that knowledge gets transferred into the disciple. और समाज में आने के 7-8 साल के बाद में जब वो जैन मुनियों को लगा कि वो ज्ञान समाज को मिलना चाहिए तो मेरे द्वारा लिखा गया. So after coming into society, 7 to 8 years after coming into society, when those Jain monks of the Jain Gurus of the Himalayas felt that it was an appropriate time for that knowledge to be distributed, that knowledge came out through my medium. वो ज्ञान भी लिखा गया, मैंने नहीं लिखा. So that knowledge was written, but I did not write it. कुछ नहीं, एक पैड और पेन लेकर के सोता था, सुबह 3:30 बजे उठ करके लिखना चालू करता था, 1 घंटा 2 घंटा लिखता था. So I used to take a pad and a pen and I used to sit at 3:30 a.m. in the morning and whatever flowed I wrote about it. और उस समय इतनी स्पीड रहती थी कि ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझसे लिखवा रहा है. And there was such a flow, such a strong flow that I used to be aware that I'm not writing this, it was being written through me. यूके में एक हेजल नामक लेखिका है. There is a writer in UK named Hazel. खूब गोल्ड मेडलिस्ट थे वो. She's a gold medalist and has won many awards. और वो बोलती, स्वामी जी मुझे पुस्तक लिखने में 3-4 साल लगते हैं, आप 45 दिन में कैसे लिख लेते हो? And she said to me that Swamiji, that it takes me 3 years to write a book. How are you writing one in 45 days? मैंने बोला लिखता नहीं, लिखी जाती है. And I told her that I am not writing it. It gets written through me. ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं. आप देखो जितने भी साइंटिस्ट हुए, जिनसे भी बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए ना, उनको पूछो तुमने क्या कहा, बोले नहीं मैं इसकी प्रैक्टिस करता था, एक दिन अचानक हो गया. You will see, and I told her that you will see that sometimes the scientists who are doing research for many years, they will make a discovery and you will ask them that, have you made the discovery today? And they'll say, no, I've been practicing and doing research for many years and it just happened on this day. यानी जब भी कोई नया आविष्कार होता है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा स्वयं उसके माध्यम से करा देता है. So whenever there is a new invention, man does not make this invention himself. It happens, Paramatma, the universal consciousness, makes it happen through the medium of man. तो वो लेखिका ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं यूके में था. The writer was in Australia and I was in UK. तो उसको पता चला कि मैं यूके में हूँ तो वो यूके में आई. Then she found out that I was in the UK, so she came to the UK. और मेरा इंटरव्यू लेना चाहा. And she wanted to take my interview. मैंने उसको बोला एक काम कर, तू लंदन से एक पत्थर उठा के ला, वो सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर लाएगी तो मैं तेरे को इंटरव्यू दूंगा. And I told her, do one thing, that if you find a stone that's lying on the streets of London, तो 17-18 किलोमीटर घूमी, फिर एक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर मिला, उसको टिश्यू पेपर से उठा करके लेके आई. And I said, then I will meet with you if you bring that stone to me. So she walked around for 17 kilometers in London and she found a stone lying on the street. She picked it up with a tissue paper and brought it to me. मेरे घर पे आके उसको बेसिन से धोया. She came to my house, then washed it और धोने के बाद में मेरे हाथ में दिया. And then after washing it, she gave it in my hand. मैंने थोड़ी देर हाथ में रखा और गुरु मंत्र का जाप किया और जाप करके उसको वापस दिया. I held it in my hand and I chanted the Guru mantra for a while and then I gave it back to her. तो उसने मेरे पे पुस्तक लिखी है 6 सेंस. उसने कहा है जब मैंने स्वामी जी को पत्थर दिया तो एक सामान्य पत्थर था और स्वामी जी ने मुझे पत्थर दिया वो डायमंड से भी ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस थे. And so she has written in her book called The Sixth Sense. She's written about me in that when I'd given the stone to Swamiji, it was an ordinary stone, but when he gave it to me, the vibrations were very high. मैंने उसको कहा प्राचीन समय में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती थी वो तुझे समझाने के लिए ये कार्य किया था.
And I told her that in the ancient times in India, whenever the idols, the statues were being energized, I have demonstrated that and taught you that in a practical manner. जितने भी प्राचीन मंदिर बने हुए ना, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की जाती थी. All the ancient temples in India, the energizing of the statue happens यानी through a पहले very process. किसी पवित्र पत्थर का चुनाव किया जाता था. Firstly, they choose a suitable stone that is very pure. और पवित्र पत्थर से आशय वो सब दूर से एक जैसा हो. And by pure, I mean that from every angle it is equal. देखिए, जैसे एक पत्थर है, वो एक जगह 90% अच्छा है, एक जगह 95% अच्छा है, एक जगह 92% अच्छा है, एक जगह 90% अच्छा है, बीच में और 60% अच्छा है. So, for example, if one corner of the stone is good, 90% good, if another corner is 80% good, if another corner is 52% good, and another corner is 90%, and the middle is 60% good. लेकिन दूसरा पत्थर है जो 80% सब जगह अच्छा है, तो जो 80% है ना, वो सिलेक्ट किया जाएगा. And then there is another piece of stone that in every corner and in the center it is 80% good. Then the one that's equally good in all corners, that is selected. पत्थर में भी वाइब्रेशंस की समरसता होनी चाहिए. So even in the stone, the vibrations should be equal everywhere. तो अच्छे पत्थर से निर्मित मूर्ति, अच्छे पत्थर को बनाने वाले मूर्तिकार से निर्मित मूर्ति, वो मूर्तिकार का भी स्थिति अच्छा होना चाहिए. So then we select a pure stone to create the sculpture, and even the sculptor who will create the idol or the statue, their state must also be good. और तीसरा, जो प्राण प्रतिष्ठा करता है ना, उस व्यक्ति का भी उतना अधिकार होना चाहिए वो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला हो. And then the third thing is that the person who is energizing that statue, even their state should be good and they should be authorized to energize it. चौथा, उसमें नियमित ध्यान साधना करके पूजा की जाती हो. And fourth, that after the creation of the statue and energizing it, there should be regular looking after and rituals performed to cleanse and keep that statue pure. होता है ना, ऐसे किसी मंदिर के अंदर आप जब दर्शन करने जाते हैं ना, तो दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं, 6-6 घंटे लाइन लगाते हैं. So when you will see that sometimes when you visit temples that are very popular, then sometimes you have to stand in queue for 6 to 8 hours. और 6 घंटे के बाद आपको 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड के लिए दर्शन करने को मिलता है. And after 6 hours or 8 hours, then you don't get a lot of time in front of the statue. You may get a minute at the most. पुजारी भगा देता है, आगे खसको, आगे खसको, आगे खसको. And then the priest will tell you, move along, move along, move along. फिर आप घर आ जाते हो. And then you come home. घर आने के बाद में 10-15 दिन के बाद में आपके मित्र ने, आपके सहेली ने कहा, चलते हो क्या फिर दर्शन करने को, तो आप तैयार हो जाते हो. And after coming home, your friend might say that, do you want to go back? After a few days, your friend might ask you, do you want to go back to the temple? And then you agree and you are ready to go back. आपको बुद्धि है, आप थोड़ा बुद्धि से सोचो ना, जहाँ 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता हो, 1 मिनट में भगा दिया जाते हो, ऐसी जगह जिंदगी में कभी जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ जाने को तैयार हो जाते. क्यों? You are intellectual, so just imagine that a place where you have to queue for so long and then you don't even get time to look at and be in the presence of the statue and you've been chased away. Would you like to normally go back to that place? No. But still, when your friend asks, you are ready to go back to the temple. क्योंकि वहाँ जाके आपको आत्म शांति का अनुभव होता है. So why is that? Because when you go there, you experience inner peace. 1 मिनट में आपको आत्म समाधान मिलता है. Within that 1 minute, you experience satisfaction. 1 मिनट में आप अंतर्मुखी हो जाते हैं. And in that 1 minute, you become introversive. इसके ऊपर भी मैंने अनुसंधान किया है. क्या ये मंदिर के कारण हुआ? नहीं. I have studied that as well. Did that happen because of the temple? No. ये वो मूर्ति के कारण हुआ? नहीं. Did it happen because of the statue? No. फिर ये घटना कैसे घटी? Then how did it happen? किसी संत ने, किसी महात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा करते समय स्वयं ने जो की हुई 40-40 साल की अंतर्मुखी साधना है ना, उसकी सारी शक्ति उस मूर्ति में प्रवाहित कर दी. A saint or a sage, they have done spiritual penance for 40 to 60 years and conserve that energy of their spiritual practice, the introversive energies of their spiritual practice, and they've established them into that statue. प्रवाहित करते समय ये संकल्प किया, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करेगा वो अंतर्मुखी हो जाए.
So when they were establishing those energies in the statue, they had one resolution that whoever does darshan, whoever comes to see that statue, they too will become introversive. तो जैसे आपने उस मूर्ति के दर्शन किए, आप अंतर्मुखी हो गए. So just as you had the vision of the statue, you became introversive. तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है. So Paramatma is not in that statue. Paramatma is not outside at all. Paramatma is within you. मूर्ति ने केवल आपको अंतर्मुखी करने का कार्य किया. The statue has only done the work of turning you inwards to making you introversive. देखिए, आपका चेहरा सफेद है क्या पीला है, ये आपको नहीं मालूम ना. Look, you don't know if your face is white or yellow. जिस प्रकार से आपका ही चेहरा आपको ही देखने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आपके भीतर का परमात्मा आपको ही अनुभव होने के लिए मूर्ति की आवश्यकता होती है. मूर्ति ने मिरर का काम किया. In the way that you need a mirror to look at your own face, in the same way, the statue becomes a mirror for you and makes you introversive. तो परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है, लेकिन उस पर आपका संपूर्ण विश्वास होना चाहिए. So Paramatma is within you only, but you should have full faith and belief in it. अब देखिए, मैं अनुभव करता हूँ कि परमात्मा मेरे भीतर है, मेरे अंदर है. क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ऐसा अनुभव करते थे. तो जैसे उनके अंतर्मुखी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई, मुझे भी वो अनुभूति प्राप्त हो गई. So I believe that Paramatma is in me. I believe in that fully. Why? Because my guru used to believe in it, and just as his introversive state became within me and I became introversive, I got the same state as him, and I believe Paramatma is within me. और जैसे उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया ना, तो परमात्मा की खोज खत्म हो गई, क्योंकि परमात्मा अपने भीतर ही अनुभव होने लग गया. And just as he made me attain self-realization, I experienced Paramatma within me, and then my search for Paramatma came to an end. मेरे गुरु परमात्मा नहीं थे, मेरे शरीर के सामान्य मनुष्य थे, फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया. My guru was not Paramatma, he was an ordinary man like me, and yet I believed him to be my Paramatma. देखो, मैं ना बचपन से लेके चला था कि कोई व्यक्ति परमात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नाशवान है, तो परमात्मा तो अविनाशी है, तो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? So from a young age, I believed that Paramatma cannot be a person, a physical person, because a person is perishable and Paramatma is eternal. लेकिन ये धारणा एक क्षण में टूट गई. But that belief was broken in one moment. उनको परमात्मा इसलिए मान लिया कि उनके बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई. And the reason I believed him to be my Paramatma was because after meeting with him, उस the दिन search जाना, for Paramatma ended. उस दिन जाना कि परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है. And on that day, I came to know that Paramatma is a universal consciousness. It is लेकिन not one individual. उस विश्व चेतना शक्ति ने मुझे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, कौन सा मार्ग अपनाया, कौन सा माध्यम अपनाया, वो माध्यम में मेरे लिए परमात्मा हो गया. But the universal consciousness that is present everywhere has selected that medium, that individual to reach to me. So I believe that medium to be my Paramatma. मैं आपको एक और उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ. समझ लो, आपके शहर के पास एक नदी है. I will give you another example. Imagine that there is a river flowing by your town or city. और वो नदी का पानी आपके शहर में लाया जा रहा है. And that water from the river is being brought into the city. नदी के पास में बहुत बड़े-बड़े पाइप है, 20-20 फीट के पाइप है. And the pipeline at the river, closest to the river, is very big. आप पाइप को हाथ लगाते हो, ठंडा ठंडा लगता है, कान लगाते हो, पानी जाने की आवाज सुनाई आती है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता. But when you are at the pipeline, if you put your hand to it, you can feel that it is cool. When you put your ear to it, you can hear that the water is flowing through it, but you don't get the water from there. फिर वो 20 फीट का पाइप 10 फीट का होता है, 5 फीट का होता है, 3 फीट का होता है, 2 फीट का होता है, 1 फीट का होता है. यानी पाइप का साइज छोटा 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 होते जाएगा, लेकिन अनुभूति वही, पानी पीने को नहीं मिलेगा. हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे पानी की आवाज सुनाई आएगी. So then, as the pipeline gets closer to the city, you will see that the pipeline gets smaller and smaller. First, it's 10 feet in diameter, then 5 feet, then 2 feet, then 1 feet. But throughout the whole pipeline, you will not get water to drink it. You can touch it, the pipeline, and feel it's cool. You can hear the water flowing, but you don't get the water to drink it. उसके बाद में आपके फ्लैट में जो छोटा सा नल है, छोटी सी टेप है, मुंह वहाँ लगाओगे तो ही पानी पीने को मिलेगा. But the tap in your house, that is very tiny and very small compared to the pipeline. If you put your mouth to it and open the tap, then you can have the water to drink.
तो आप बताओ ना, वो 20 फीट के और 10 फीट के पाइप आपके क्या काम के? So then you just think about it, that big pipe, what is that of any use to you? आपकी प्यास तो वो छोटे से नल ने बुझाई ना. Your thirst has been quenched by that small tap. बिल्कुल ठीक है, सही होगा. विश्व चेतना, विश्व में फैली हुई विश्व चेतना शक्ति, मेरे को क्या करने का? मेरे को वो विश्व चेतना शक्ति जिस माध्यम से मिली, उस माध्यम को ही समर्पित होकर सारा ग्रहण किया है. So the universal consciousness is very vast. It may be very vast and spread in every particle around the universe, but what is that of any use if you cannot access it? The universal consciousness you have attained from that one tap, and therefore you be surrendered to that tap and receive. जब परमात्मा के माध्यम पे एकाग्रता की ना, तब जाके सारे आध्यात्मिक प्रगति हुई है. Just when I focused my attention on the medium of Paramatma, that is when my spiritual progress started. सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा समाधान है मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया. इससे बड़ा कोई समाधान ही नहीं है. The biggest satisfaction in life is that I have attained Paramatma. There is no other satisfaction bigger than that. ये समाधान एक बार आपको जीवन में मिल गया ना, फिर जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा. Once you have attained that satisfaction in life, there is nothing left to attain. और परमात्मा तुम अपने भीतर अनुभव करते हो. And you will experience Paramatma from within you. और यही तुम तुम्हारे गुरु को लो, ये हमारा उद्देश्य है. And it is our objective that you yourself become your own guru. फिर आपको कोई बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं. And then you do not require anything from outside. There is no search on the outside. अब देखो ना, कोरोना काल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद थे. So during the period of Corona, the pandemic, all the temples, churches, all the places of worship were closed. लेकिन साधकों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब साधक अपने भीतर ही परमात्मा को अनुभव करते थे. But all of our followers felt no difference because they all experienced Paramatma from within themselves. तो योग क्या है, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए कुछ बातें जानना अत्यंत आवश्यक है. So to understand what is yoga, it is important to understand a few things. उसमें की पहली बात है कि परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति. So firstly, Paramatma is universal consciousness. और उसके बाद में विश्व चेतना शक्ति जिस माध्यम से बहती है ना, हम उसको परमात्मा कहना चालू कर देते हैं. And the universal consciousness flows through whichever medium, we start calling that medium Paramatma. जैसे मैंने मेरे गुरु को परमात्मा मानना चालू किया, Just as I started believing that my guru was my Paramatma, तो ऑटोमेटिकली गुरु के माध्यम से मेरा चित्त उनके एनर्जी पे गया, उनके ऊर्जा पे गया. so automatically by believing my guru to be Paramatma, my attention started going on his energy, on the energy that was flowing through him. वास्तव में कोई भी परमात्मा नहीं है. Actually, no physical person can be a Paramatma. जिनको भी हम परमात्मा मानते हैं ना, वो परमात्मा के माध्यम है, उनके माध्यम से परमात्मा की शक्ति बही है. Whoever we believe to be Paramatma is the medium of Paramatma through whom the universal consciousness flows. मनुष्य का स्वभाव है, जिसको छू करके देख सकते हैं, जो आंखों से दिखता है उसको मानता है, जो नहीं दिखता उसको नहीं मानता. It is the nature of mankind that they believe in things that they can touch and feel and see. जैसे अपन बोलते हैं ना कि नल आया, नल आता है क्या? नल तो वहीं रहता है, नल में पानी आता है. So when we say the tap has come, it doesn't mean that the tap is coming or not. लेकिन It's नल the दिखता water है, is flowing नल को through. छू के देख सकते हैं, तो हम बोलते हैं नल आया. नल को महत्व देते हैं, पानी को महत्व नहीं देते. So we can touch the tap and we can see the tap. So we are saying the tap is working, but actually it's the water flowing through it. ठीक उसी प्रकार से हम जिसके माध्यम से परमात्मा बहता है ना, तो हम उसको ही परमात्मा मानना चालू कर देते, जबकि परमात्मा कोई भी व्यक्ति नहीं है. So we give importance to the tap, not to the water. In the same way, when we believe the medium of the Paramatma and we experience Paramatma through that medium, we start believing that that medium is Paramatma. और ये बात ना मैं जब 5 साल का था तभी समझ गया था. And I understood this when I was 5 years old. मेरी नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा. And my maternal grandmother used to say that Paramatma is eternal. Paramatma was there yesterday, Paramatma is there today, and Paramatma will be there tomorrow. तो मैं बचपन में समझ गया था कोई भी शरीर ऐसा नहीं है ना जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा. And in my childhood itself, I came to understand that there is no physical body that existed yesterday, is there today, and will always be there tomorrow. And therefore, Paramatma cannot be a physical body.
तो मैंने नानी को वचन दिया था, मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा और जिस दिन मेरे को आज का परमात्मा मिलेगा ना, फिर मैं उसको सब में बांटूंगा. And then, when I was young, I assured and made a promise to my maternal grandmother that I will search for the Paramatma that is present that is there in the present, the living Paramatma. And once I find Paramatma, I will share that knowledge with everyone in. और वही परमात्मा को बांटने का कार्य पिछले 30 साल से दुनिया भर में कर रहा हूँ. And I have been doing that work of spreading the knowledge of Paramatma in the entire world for the last 30 years. तो आप भी आपके कंसेप्ट क्लियर कर लो. परमात्मा यानी कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है. So understand these concepts very clearly, that Paramatma is not an individual, Paramatma is the universal consciousness. और परमात्मा का टुकड़ा अपने अंदर नहीं है, साक्षात परमात्मा अपने अंदर है. And it is not that there is a small part of Paramatma that is within us. It is the essence of Paramatma that is within us. मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ. I will give you another example. जैसे गंगा नदी का पानी है ना, खूब शुद्ध है, खूब पवित्र है, वो सालों तक सड़ता नहीं है. So the water from the river Ganga, it remains pure and for many years it doesn't spoil. ये पानी के जो गुण है ना, वही गुण अगर आप एक लोटे के अंदर लेके आओगे गंगा, तो भी वही गुण रहेंगे. So the water in the values that the water has, when you take a little vessel and put that water from river Ganga into it, it will maintain the same qualities. आप एक बोतल में भर के लाओगे तो भी उसके वही गुण रहेंगे. And if you fill a bottle with it, it will still have the same qualities. तो कहने का अर्थ, आप भले ही बोतल में भर के लेके आओ, आप भले ही लोटे में भर के लाओ, लेकिन वो रहेगा तो उतना ही ना, वही गुण रहेगा. So what I'm trying to say is that whether you fill the water from the river Ganga in a bottle or in a different vessel, the quality will remain the same. ठीक वैसे समझ लो ना, पुरुष यानी लोटा, बॉटल यानी स्त्री. So in the same way, just understand that the vessel is a man and a bottle is a female. तो जैसे गंगा नदी का पानी शुद्ध है ना, वैसे ही शुद्ध पानी बॉटल का भी और लोटे का भी. So in the same way that the water of river Ganga is pure, in the same way it is pure just in the bottle as well as the vessel. तो साक्षात परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन आपको वो विश्वास आना चाहिए. So Paramatma himself is within you, but you should believe in that. हुआ ना, कुछ उद्योगपति मुझे आश्रम में मिलने को आए, स्वामी जी हम शांति की खोज में दुनिया में घूम रहे. Some very rich people came to meet with me in my ashram in India, and they were saying that Swamiji, we have been searching and touring around the whole world in search of peace. मैंने उनको उत्तर दिया, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी. And I responded to them that you will not find it anywhere in the world. क्योंकि तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो, वो बाहर है ही नहीं. परमात्मा और आत्म शांति आपके भीतर है. एक ही सिक्के के दो पहलू है. अगर आपको परमात्मा को प्राप्ति हो गया, आत्म शांति वैसे ही प्राप्त हो जाएगी. So I told them that Paramatma and inner peace and peace cannot be found outside. They are the two sides of the same coin. Once you attain Paramatma from within, you will also find peace within you. तो परमात्मा यानी एक विश्व चेतना शक्ति जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी. So Paramatma is the universal consciousness that existed yesterday, exists today and will exist in the future. दूसरा है धर्म. And the second is religion. दूसरा अपन जिसको धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धति है. What we believe to be religion are not religions, they are methods of worship. हो सकता है उपासना की पद्धति आपकी अलग हो, मेरी अलग हो. It could be that the methods of worship that we follow, you may be following a different one, I might be following a different one. लेकिन अपना धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म. But our religion is the same, the religion of humanity. तो कहने का अर्थ, कई लोग रहते ना धर्म परिवर्तन करते, लेकिन धर्म परिवर्तन करके कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी. Many people change their religions, but by changing religions, nothing happens. देखिए, एक आदमी के पेट में बहुत जोर से मरोड़े आ रही है, उसका पेट दर्द खूब हो रहा है. उस आदमी के सफेद कपड़े पहना के उसको पीले कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं. So just imagine if a person has very intense stomach pains and cramps, if you change their clothes, if they were wearing white clothes, you change them to yellow, will their stomach ache go away? No. पीले कपड़े निकाल के हरे कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं. And if you take out the yellow clothes and make them wear green clothes, will it heal their stomach ache? No. हरे कपड़े निकाल करके ऑरेंज कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं. And if you remove the green clothes and give them orange clothes, will their stomach ache be healed? No. तो ये उपासना पद्धति बाहरी आवरण है, इसमें भीतरी कुछ भी चेंज नहीं आएगा. So all of these methods of worship are external and it will not change anything internally. यही बात हिमालय के गुरुओं ने पिछले 800 सालों से अध्ययन किया है. And this is what
the Himalayas of the Gurus have been analyzing and studying for the last 800 years. इसलिए जितनी उपासना पद्धतियां हैं उसमें सिर्फ कर्म को महत्व है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। So in all of these methods of worship, importance has been given on the actions, on the deeds that we perform. Do good deeds and don't do bad deeds. लेकिन अच्छे कर्म करो तो भी अगला जन्म है, बुरे कर्म करो तो भी अगला जन्म है। But even if you do good deeds, then you still have to take the next birth. And if you do bad deeds, you still have to take the next birth. तो ये कर्मों से मुक्ति कैसे संभव है? So how is it possible to be free मैं of all आपको of these एक और deeds? उदाहरण से समझाता हूँ। I will explain to you with another example. देखिए, जापान के अंदर प्रश्न ये बहुत पूछते हैं कि सब कुछ अगर जीवन में होने वाला निश्चित है तो फिर ध्यान काय को करने का, भगवान काय को चाहिए? So in Japan, I get asked this question a lot, that if everything is predetermined, then why should we meditate? पहली बात तो ना, पिछले जन्म में जो हमको संगत मिली है वो संगत के कारण हमको विचार आए। So the first thing is that in our past birth, the company that we kept, that company influences our thoughts. और जैसे विचार आए वैसे कर्म हमारे हाथ से घटित हुए। And when we get thoughts influenced by the company we keep, then our actions are according to those thoughts. और जो कर्म घटित हुए वो कर्म भोगने के लिए हमने जन्म लिया। And we take this birth to bear the fruits of those deeds and actions that we done in the past life. जन्म लेने के बाद में अगर हम गुरु मार्ग के अंदर गए, गुरु मार्ग यानी गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी एक सामूहिकता, गुरु यानी एक कलेक्टिविटी, उसके अंदर गए तो क्या होगा? And after taking birth, we come onto this path of the Guru. The Guru is not an individual, but it's a collectivity of souls. देखिए, गुरु और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है बताता हूँ। I will tell you the difference between a Guru and an ordinary man. देखिए, एक पानी का ग्लास है, हाँ, पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दो तो काली शाही से पूरा ग्लास का पानी काला हो जाएगा। Imagine there is a glass of water and you take a spoonful of black ink and mix it in the water. The entire water in the glass will become black. लेकिन वही काली शाही तुम गंगा नदी में डाल दो, वो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। But if you take that black ink and put it in the river Ganga, you will not even know where it's dissolved. यानी जब मैं करके तुम अपना अस्तित्व छोटा रखते हो, ग्लास का पानी रहते हो, तो जीवन की छोटी सी समस्या भी तुमको कलुषित कर देती है। So imagine if you increase your ego of I and make your existence very small, then even the smallest of troubles in your life will disturb you. जैसे तुम गुरु मार्ग में आते हो, ध्यान मार्ग में आते हो तो क्या होता है, गंगा नदी का पानी बहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या कहाँ चली गई तुमको ही पता नहीं चलता। But when you come onto this path of the Guru, on the path of meditation, then you become the river Ganga and you won't even realize where all your problems have gone away. तो आपने सामूहिकता में आए, आपने ध्यान किया, आपने योग किया, तो क्या हुआ, ऐसा करते 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 आप जीवन के इस मोड़ तक पहुंचे। So when you come into the collectivity and you meditate regularly, then what will happen is that you will come to this point in your life. और इस मोड़ पे पहुंचते पहुंचते आपने पूर्व जन्म के सारे कर्म भोग लिए। And when you reach this point in your life, by this point you have borne all the fruits of your past life's karmas. और फिर आपका आभा मंडल, आपका ऑरा इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से बुरा कर्म होता ही नहीं है। And then your aura will become so good that you will not be able to do any bad deeds. सदैव याद रखो, बुरा कर्म करने के लिए आपके पास में बुरी ऊर्जा होनी चाहिए। अगर बुरी ऊर्जा ही नहीं होगी तो आपसे बुरा कर्म होगा ही नहीं। So remember this always, that to do bad deeds, that you will need bad energy to do bad deeds. But if you don't have bad energy anymore, then you will फिर not be आप able to do जीवन bad के deeds. धीरे धीरे इस मोड़ तक पहुंचे। इसमें जो भी अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म मैंने किए नहीं बोले, गुरु कृपा में हुए, ऐसा करके छोड़ दिए। So then you will reach to this point in your life where you will be doing good deeds, but you won't bind them to yourself. You won't say, I did these good deeds. You will say that these good deeds happened through my medium, but my Guru did them. तो योग मार्ग में एक अवस्था आपको प्राप्त होती है जिसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं, वो प्राप्त होती है। So on the path of the yoga, you will attain a state. This state is called karma-free state. इसके अंदर आपने पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए, in which you have borne all the fruits of the past karmas. बुरे कर्म आपसे होते ही नहीं है। And you are no longer able to do any bad deeds. जो अच्छे कर्म किए वो मैंने किए नहीं बोला और गुरु को समर्पित कर दिए। And all the good deeds that you do not bind to yourself by saying, I did that. You surrender them to your Guru. तो यहाँ जाके आपका हिसाब किताब खत्म हो गया ना। So all your accounts are cleared when you reach here. आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। आपके अकाउंट में कोई कर्म ही बाकी नहीं, ना अच्छे कर्म है ना बुरे कर्म है। There are no more karmas left in your account and you have attained the karma-free state. तो जब कर्म ही नहीं है तो फिर अगला जन्म कहाँ है? So when you have no karmas left, then there is no question of taking another birth.
यानी प्रत्येक कर्म अगला जन्म लेने का कारण बनता है. So each karma, it becomes the reason for you to take another birth. हुआ ना, एक बार आश्रम में एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने को आई. Once an IAS officer came to meet with me in my ashram. वो बोली, स्वामी जी मैं तो खूब दान धर्म करती हूँ, खूब पुण्य कर्म करती हूँ, मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही, मेरे को कोई ध्यान की जरूरत नहीं. And she said that, Swamiji, I do a lot of donation, I donate a lot of money, and I do a lot of social work. So I will definitely get moksha, मैंने उसको liberation. बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा. And I told her that no, you तो उसको won't. एकदम शौक लगा, कैसे नहीं मिलेगा? And she was shocked. Why will I not get? मैं तो बहुत पुण्य करती हूँ, मैं तो बहुत दान करती हूँ. And she said that I donate a lot and I do a lot of good deeds. मैंने उसको बोला तो क्या बोली, मैं बहुत दान करती हूँ, मैं बहुत पुण्य करती हूँ, मैं के साथ किया गया दान तुम अपने साथ बांध रही है, तो वो भोगने के लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये नहीं समझ में आता. And I said that, what did you just say? You said that I donate and I do good deeds. Therefore, you have bound yourself to this, and therefore, you will have to take another birth to bear the fruits of those deeds. तो वो एकदम शौक हो गई, बोली ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था. And she was very shocked, and she said that I had never thought of it this way. यानी दान करने से कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता. So one cannot attain moksha just by donating. सिर्फ दान करने से एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है, जो सदैव वो पाना चाहिए पाना चाहिए पाना चाहिए कि आपका जाप चल रहा है ना, वो थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक लगाते हैं. And the only thing achieved through donation is that there is a transformation in your life. One change that in your entire life you've been acquiring things. और And दान देते हैं it develops this feeling of giving. दान देते हैं ना, अपनी समस्या की तरफ से चित्त हटा के दूसरे की समस्या की तरफ डालते हैं. So when we are donating, we are removing our attention from our own problems and we are putting them on other people's problems. और उसके फायदे क्या होते हैं, जब तुम्हारा चित्त तुम्हारी समस्या से हट जाता है तो समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है. And the benefit of that is that when your attention, your chit moves away from your own problems, then gradually the problem goes away. It और reduces. दूसरों को दान करके दूसरे को मदद करने की प्रेरणा मिलती है. And when you are donating to others, then you get the inspiration to donate and help others. तो कहने का अर्थ, जितनी भी उपासना पद्धति है ना, सब कर्मों के ऊपर आधारित है. अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ो. So what I'm trying to say is that all the methods of worship are based on some guidance and rules that do good deeds, don't do bad deeds. और सब में उपदेश है. And all of them have rules. इसलिए गुरु ने देखा उपदेश कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग नहीं सुनते. And that is why the Guru saw that some people listen to these तो rules उन्होंने and some people don't. एक अनुभूति का मार्ग चुना कि वो अनुभूति के बाद में आपके भीतर की आत्मा जागृत हो जाती है. And then they chose the path of experience, that once a person experiences themselves, has the experience of this knowledge, then whatever is good, you get all of that knowledge from within. और आत्मा का ज्ञान होने के बाद में कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, इसका ज्ञान आपको स्वयं को अंदर से होना चालू हो जाता है. And once you attain the inner knowledge, then you come to know yourself from within, what you should do and what you should not do. ये पिछले 30 सालों के अंदर 72 देशों के अंदर फैल गया है. This has spread in 72 countries over the last 30 years. इसका एक ही कारण है, इसमें कोई उपदेश नहीं है. And there is only one reason for that. This has no restrictions, no तुम्हारे rules. दिनचर्या में कुछ भी नहीं कहते. There is no change required in your daily routine. तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कोई बंधन ही नहीं है. So people like it very much because there are no restrictions. इसके अंदर विशेषता ये कि जो अच्छी बात है ना वही आपके जीवन में रहेगी, बुरी बातें वो खुद ही छूट जाएगी. What is unique in this path is that whatever is good for you will remain in your life, and whatever is not good with you will क्या end. अच्छा है और क्या बुरा है, इसके ऊपर अगर हम बात करने बैठे ना तो रात भर बात कर सकते हैं. So if we start to talk about what is good and what is bad, then we can spend the entire night just discussing it. एक बार क्या हुआ, एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मेरा कार्यक्रम रखा गया. Once I was invited to give a talk at a rehabilitation center. तो एक बहुत बड़ा हॉल था. There was a very big hall. वो हॉल में सब शराब पीने वाले लोगों को इकट्ठा करके रखा था. So all the alcoholics were gathered in that hall. एक आधा साधु बाबा जी जाता था, वो उनको बोलता, देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. तो वो गर्दन हिलाते थे. So one saint was there. Then he said that if you don't stop drinking alcohol, then you won't even get placed in hell. दूसरा एक आधा डॉक्टर जाता था, वो बोलता था तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा. वो गर्दन हिलाते थे. So the next was a doctor to give a speech, and the doctor said that if you don't stop drinking alcohol, then your liver will be damaged, and they all were nodding their heads. क्योंकि रोज उनको ये उपदेश सुनने की आदत हो गई थी. Because they were used to listening to such things every day.
जैसे ही मेरा कार्यक्रम चालू हुआ ना, मैंने बोला जो व्यक्ति 1 बोतल शराब पीता है वो कल से 2 बोतल पिए, मैं आपकी शराब छुड़ाने को आया ही नहीं हूँ. So when my program started, I started by saying that the person who is drinking 1 bottle of alcohol every day, from tomorrow you can start drinking 2 bottles, because I have not come here to make you stop drinking. सब शराबियों ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया, हाँ क्या स्वामी जी बोले खूब पिया करो. So all the alcoholics started clapping and welcomed me that wow, this saint has talked something really और good. दूसरा 2 बोतल पियो बोला ना, तो वो मन से ही पी लिए और वो तृप्त हो गए, और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ उधर उनका ध्यान गया. So when I said that they can drink 2 bottles of alcohol the next day, then they mentally they became very satisfied, and then they started paying attention to what I was saying. मैं उनको कहा मैं तुम्हारे जीवन में ध्यान को जोड़ने के लिए आया हूँ. And I told them that I have come into your life only to connect meditation in your life. कुछ नहीं, बाद में उनको ध्यान सिखाया. ध्यान सिखाने के बाद में 45 दिन उन्होंने अनुष्ठान किया. 45 दिन में अपने ब्रेन के वेव्स बदल जाते. So then I taught them meditation. We experienced meditation, and then they did meditation for 45 days. After that, it takes 45 days for your brain waves to change. हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाता है. And our perspective, our way of thinking changes. और 45 दिन के बाद में 90% शराबियों की शराब छूट गई. And after 45 days, 90% of the alcoholics stopped drinking alcohol. कारण क्या है? What is the reason? वो हिमालय के गुरु वहां बैठ के क्या दारू पी रहे हैं क्या? Are the gurus in the Himalayas sitting in the Himalayas and drinking alcohol? जब उनका अंश आप ग्रहण करोगे तो ऑटोमेटिकली शराब छूट जाएगी. When you receive a part of them within you, then if they are not drinking, then you will also automatically stop drinking. देखिए, मैंने आपके बगीचे में अच्छे किस्म का आम का झाड़ लगाया, उसको आम ही आएंगे, बमुल के कांटे नहीं आएंगे. I have sowed a very good quality mango seed. Then when it grows into a tree, it will only give the mango fruits. It will not give thorns. जब तक आम नहीं आते तब तक मैं बोलूँगा पानी दो, पानी दो, पानी दो. But until and unless the tree is grown and gives fruit, the mango fruit, I will continue to tell you to water it every day. तो कहने का अर्थ है कि धर्म जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो उपासना की पद्धतियां हैं. So what I'm trying to say is that what we call religion are not religions, they are methods of worship. हमारा धर्म एक ही है, हम सब मनुष्य हैं. We have only one religion, the religion of humanity. हम कुत्ते के पिल्ले होते तो कुत्ते का धर्म हमारा धर्म होता. So if we were a dog, then the religion of the dog, we would be loyal. हम अगर घोड़े के पिल्ले होते तो घोड़े का धर्म हमारा धर्म होता. So if we were a horse, then our religion would be that of a horse. हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य हमारा धर्म है. But we are humans, so our religion is humanity. और मनुष्य हिंसक नहीं है. And humanity and humans are not violent. मैंने कई ट्रक ड्राइवरों से बात की ना, बोलते समय जी सामने से गिलहरी भी गई ना तो भी ब्रेक पे पैर आ ही जाता है. And I have talked to many truck drivers, and they have said to me that when they are driving, even if a lizard is passing on the road, their foot automatically goes onto the brake. हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रक के नीचे गिलहरी भी आके मरे. And they said that we don't wish that the lizard is crushed under the truck. यानी मनुष्य मूलतः हिंसक नहीं है. What I mean to say is that mankind is not, at the root, is not violent. और इसलिए मनुष्य धर्म है, हमारा धर्म है. And that is why the religion of humanity is our religion. अब तीसरा विषय है गुरु. And the third topic is the guru. गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं है. Guru doesn't mean an individual. गुरु के साथ हजारों लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है. Millions of souls are connected with the guru. अभी आप मेरे साथ नहीं बैठे, अभी लाखों आत्माओं के साथ बैठे हुए हैं जो 30-30 साल से ध्यान कर रहे हैं. You are not just sitting here with me. You are sitting here with millions of souls who have been meditating for the last 30 years. अब ये कार्यक्रम पूरे विश्व भर में रिले हो रहा है, तो विश्व भर के सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. So this program is being relayed around the world, and there are people sitting around the world who are connected to you through this program. तो गुरु यानी एक आत्माओं का समूह. So guru is the collectivity of souls. तो उसका रोल क्या है थोड़ा आपको बता दूं. So what is his role? I will tell you. देखिए, आप कल्पना करो एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर आपने पावर हाउस के सामने एक बंगला बनाया. So just imagine that on a hill you have constructed a very beautiful bungalow.
आपके बंगले में सब इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, and you have all electrical instruments in your bungalow, लेकिन आपका कनेक्शन ही पावर हाउस से नहीं है, तो आपके घर में रात को अंधेरा रहता है. but you do not have the connection to the powerhouse, and therefore it's dark at night in your bungalow. और खूब दूर 2 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर कनेक्शन है, तो उसके यहाँ लाइट जलते रहता है रात को. But very far away, 2 kilometers away, there is a small hut, and that hut is lit up at night because it has the connection. तो उसके झोपड़ी का प्रकाश देख के आपके मन में भी इच्छा हुई कि आपके बंगले में भी प्रकाश होना चाहिए. So inspired by the light, the lit up hut, you are also inspired that your home should also have a connection. फिर आपने क्या किया, पावर हाउस में एक एप्लीकेशन दी कि मेरे को भी कनेक्शन दिया जाए. And you make an application to the powerhouse that I too, my house should also have the connection. तो पावर हाउस से एक व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन के रूप में आपके घर में आया, उसने आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस से कर दिया. So the electrician comes from the powerhouse and he does the establishes the connection, the electrical connection with your house. और वो कनेक्शन करके चला गया, क्योंकि उसको और दूसरे बंगलों में कनेक्शन देने के. And after making the connection, he leaves because he has other houses to go to. फिर आपको आपके बंगले के लाइट लगाना पड़ेंगे. Then you yourself have to switch on the lights of your bungalow. फिर आप 0 का बल्ब जलाओ, 15 का बल्ब जलाओ, 100 का जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ, या मेन स्विच ऑफ करके रखो, आपके ऊपर निर्भर है. Then whether you light a bulb, the bulb of 10 watts, 20 watts, 100 watts, or floodlights, or you keep the main switch off, it's up to you. लेकिन आप चाहो कि इलेक्ट्रिशियन आके रोज आपके घर के लाइट जलाए, वो कभी नहीं आएगा. But if you wish that the electrician comes to your house every day and switches on the light, it will never happen. बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपने भी किसी व्यक्ति को शांत देख करके आपके अंदर भी इच्छा हुई होगी, वो कितना अच्छा रहता है ना, शांत रहता है, आनंदी रहता है, खुश रहता है, उसको देख करके आपके अंदर इच्छा हुई कि आपको भी परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए. तो परमात्मा रूपी पावर हाउस ने इलेक्ट्रिशियन रूपी गुरु आपके जीवन में भेजा है. So in the same way, you too have the desire to have a spiritual progress. So Paramatma has sent the Guru in the form of the electrician into your life. आज अनुभूति के माध्यम से आपके शरीर रूपी बंगले का कनेक्शन मैं उस परमात्मा से करवा दूंगा. Now through the medium of experience today, I will do your connection with the Paramatma in the form of the powerhouse. करवाने के बाद में मैं दूसरे देश में जाऊंगा. After doing this connection, I will leave from here and go to another country. फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी करने की, ये आपके ऊपर निर्भर है. Then it is up to you how much spiritual progress you want to do. यानी परमात्मा यानी पावर हाउस, Meaning Paramatma is the powerhouse, इलेक्ट्रिशियन यानी गुरु, electrician is the Guru, और आपको ही आपके घर के लाइट जलाना पड़ेगा, यानी आपको ही आपके आध्यात्मिक प्रगति करना पड़ेगी. and you only have to switch on the lights of your home, meaning you yourself will have to do your spiritual progress. तो आज हमने जाना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति, So today we have come to know that Paramatma is universal consciousness. धर्म यानी मनुष्य धर्म, Religion means religion of the humanity. गुरु यानी एक इलेक्ट्रिशियन जो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर देता है. Guru meaning the electrician who is connecting you to the Paramatma. और चौथा है ध्यान. And fourth is meditation. ध्यान यानी कुछ नहीं करना ही ध्यान है. To do nothing is meditation. हम जो शब्द वापरते हैं ना ध्यान करना, एक्चुअली वो भी गलत है. ध्यान करना नहीं, ध्यान में जाने का है. We often say that I'm doing meditation. This is also wrong because you have to do nothing. You लेकिन have हमारे to go में into meditation. इतना कर्ता भाव है, हम सब चीज को ध्यान करना भी कहते हैं. But we have this feeling of doership, of doing, that we also say I'm doing meditation. जब हम ध्यान में जाएंगे ना, तो हमको हमारा शरीर का विरोध सहन करना पड़ेगा. When we go into meditation, then we have to bear the resistance of our body. शरीर आपका विरोध करेगा. क्यों? क्योंकि शरीर को आदत नहीं है. The body will resist you because the body is not used to. शरीर या तो कुछ कर्म करता है या विचार करता है, तो कर्म भी नहीं करने का और विचार भी नहीं करने का, ये आदत नहीं है ना शरीर को, तो शरीर विरोध करेगा. The body is always doing something. It's either active physically or it is thinking. But in meditation, you have to do nothing, neither. And it's not habituated to do this. उसके बाद में फिर विचार आएंगे, खूब विचार आएंगे आपके मन में. And after that, you will get a lot of thoughts. आपके मन में कितने भी विचार आए ना, तो विचारों को देखने का अभ्यास करो, विचार करने मत लग जाओ. So it doesn't matter how many thoughts you get in your mind. Do not start thinking more. Just observe your thoughts, witness your thoughts. देखिए, जब आप विचार करते हो तो जाने अनजाने में आप विचारों को शक्ति देते हो, उसमें चित्त डाल के.
When you start thinking, then unknowingly or knowingly, you are giving it energy. जैसे ट्रैफिक पुलिस करता है ना, वैसे आप विचारों को देखो, अच्छा ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, अच्छा एयरपोर्ट का विचार आ रहा है क्या, ऐसा देखो, अलर्ट होके दूर रहो उससे. Just like there is a traffic policeman, he doesn't do anything, just observes all the vehicles going by. In the same way, don't start thinking, but just observe the thoughts. तो ऐसे कितने भी विचार आए ना, तो विचार करने मत लग जाओ. So it doesn't matter how many thoughts you have, just don't get engaged with them. दूसरा, विचारों को रोकने का भी कोशिश मत करो, रोकना भी फिर शरीर से होगा. And do not try to stop any of these thoughts, because when you try to stop, that is at the physical level as well. ध्यान में शरीर का कोई रोल नहीं है. There is no role of the physical body in meditation. और तीसरा है बुद्धि. बुद्धि आपको बोलेगी आपसे होने वाला नहीं, ध्यान तुमने कभी किया ही नहीं, ध्यान तुमसे होगा ही नहीं, ऐसा खूब निगेटिव तुमको बोलेगी, तो भी उसकी बातें नहीं सुनने का. And the third obstacle will be of the intellect, and your intellect will say that you have never meditated in life before, you don't know how to meditate, you won't be able to do meditation, its objective is to get you up. वहां से उठाने के लिए बुद्धि एकदम कोई अर्जेंट काम याद दिलाएगी, ऐसा याद दिलाए ना तो भी उठने का नहीं, क्योंकि वो उठाने के लिए वो बहाना है, उठने के बाद में वो काम नहीं करोगे. The intellect will remind you of some urgent work you have to do just to get you up out of meditation, but even if it tries, do not do that, because it's just using that urgent work as an excuse to get you out of meditation. दूसरा ना, ये ध्यान के बारे में बड़ा विरोध का वातावरण है. So there is a very adverse environment for meditation. लोग ना धार्मिकता और आध्यात्मिकता को एक ही समझते हैं, जबकि धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है. There is a misconception about meditation in society. People think that spirituality and religion are the same thing, but in actual fact they are two separate things. एक धार्मिक व्यक्ति धीरे 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 आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता. A religious person can gradually become spiritual, but a spiritual person can never become religious. कई बार कई जैन मुनि मुझे बोलते, स्वामी जी आप जैन धर्म में आते हो क्या? Many times the Jain monks will ask me that, Swamiji, will you come onto our path into Jainism? मैं उनको उत्तर देता हूँ, समुद्र कभी नदी में आता है क्या? And I respond to them, does the sea ever go into the river? तो आध्यात्मिकता समुद्र है और धर्म उपासना पद्धति एक नदी है, उल्टा थोड़ी प्रवाह होगा. So spirituality is the ocean, is the sea, and religion is a river. So the sea will never flow into the river. और धर्म तो एक सीढ़ी है, उसके बाद में आध्यात्मिकता यहाँ मकान है, यहाँ पहुँचने के बाद में सीढ़ी छूट जाती है. So religion, the methods of worship are steps, are a ladder that reach up to the house, and spirituality is the house. इसलिए आप देखो जितनी भी उपासना पद्धति है ना वो सीढ़ी है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहता. So you will see that all methods of worship are all ladders and steps. Once you have climbed up the steps and reached the house, the steps have no importance or no अभी value. आपको ना एक छोटा सा मापदंड देता हूँ. I am giving you a small measurement. कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, किसी उपासना विशेष की बात कर रहा है, तो समझ लो वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है, पहुंचा नहीं. If an individual, a person is talking about a specific religion and keeps talking about one religion, that means that they are sitting on the steps. They have not reached steps. और जो व्यक्ति पहुंच गया वो किसी उपासना पद्धति का बात ही नहीं करेगा. But a person who has reached the house, he never talks about any specific religion. अब हम ध्यान में जाएंगे. Now we will meditate. जो लोग कुर्सी पे बैठे वो नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठो, नहीं तो नंगे पैर अपने जमीन को स्पर्श करो. Those people who are sitting on the chairs, if you are able to sit down, you can move and sit on the floor. If you cannot sit on the floor, then you can sit on your chair, but remove your shoes and socks and place your naked feet on the ground. पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है. Earth has a gravitational वो force. आपके शरीर के भीतर की सारे टेंशन को, सारे भय को, सारे बीमारियों को खींच लेती. It has the ability to pull out and absorb all of your tension, all of your negativity, all of your thoughts, all of your stress. इसका उदाहरण है, आप केक खाते गार्डन में जाके बैठो ना 10-15 मिनट, आप उठोगे तो आपके नीचे की जमीन गर्म हो चुकी होगी. So just experiment this, that go to the garden and sit there for 10 to 15 minutes. When you stand up, you will find that the place you were sitting at has become warm. गर्म हो गई, यानी आपके अंदर का निगेटिविटी, आपके अंदर के डर, आपके अंदर का टेंशन वो जमीन ने खींच लिया. And when it's warm, what does that mean? It means that it has pulled out and absorbed all of the negativity, all of the fear, all of the tension from your body. तो परमात्मा ने जब आपको बनाया ना, साथ में भूमि भी बनाई कि आपको संतुलित करे, वो बैलेंस करे, वो आपकी माँ है, लेकिन उसके गोद में जाओ तो सही.
So when Paramatma created you, he also created earth to balance you, but you have to go in and sit on the lap. हम क्या करते हैं, घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, तो कहीं पे भी हमारा टेंशन, हमारा तनाव, हमारा भय निकलने को जगह ही नहीं. But we have broken this connection. We wear slippers in the house, we wear shoes at work, and so we don't have any way of getting rid of all the stress and tension in our bodies. हिमालय में आदिवासी जातियां पृथ्वी को माँ बोलती है, और उसके बाद में कोई भी बीमारी हो तो उसको प्रार्थना करके अपने आप को ठीक करते हैं. In the Himalayas, there are many tribals who call the earth Mother Earth, and they get rid of all of their illnesses and diseases just through praying to Mother Earth. प्राय ये पद्धति मैंने जैन गुरुओं को सिखाई है. And I have taught this method to the Jain monks. क्योंकि वो बाहर की दवाइयाँ नहीं लेते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, तो उनको अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये मार्ग बताया. I have taught this to many Jain people because they don't believe in going to hospitals or modern medicine, and so I have taught this to them. महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज में भी मैंने डॉक्टरों को ये शिविर करवाया था. So in Maharashtra, we had a event at a medical college, and I taught the doctors as well. आदमी एकदम अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है. And a person experiences relaxation. दूसरा ना, एक मंत्र है, इस मंत्र के ऊपर पूरा विश्व ध्यान कर रहा है. And there is a mantra, a chant that everyone around the world is chanting. मंत्र कुछ भी नहीं है. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. The chant is not complicated. It is very simple. I am a holy soul. I am a pure soul. जैसे आप बोलते हैं ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो महसूस करो आपने अलग अलग जाति में, अलग अलग उपासना पद्धति में, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में जन्म लिया, तो भी पवित्रता बनी हुई, यानी आत्मा का दूसरा नाम पवित्रता है. And when you say I'm a holy soul, just let go that think and feel that you have been born in different countries. I have been born in different languages. I have been born in different castes, and still my holiness has remained. जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. शुद्ध आत्मा हूँ मतलब आप कौन से पोस्ट पे हो, कौन से जाति के हो, कौन से उपासना पद्धति हो, कौन से देश के हो, सब आप भूल जाओ. आप ये भी भूल जाओ आप पुरुष हो क्या स्त्री हो. And just as you chant, I am a pure soul, then forget on what post you are on. Forget that even that you are a man or a woman. ऐसा जब आप सवेरे बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक आत्मभाव आपके अंदर निर्माण हो जाएगा. And when you chant this early in the morning, then automatically there will be a soulfulness that is धीरे धीरे developing. आत्मभाव बढ़ेगा और शरीर भाव कम होगा. So your soul consciousness will increase gradually, and your body consciousness will reduce. और मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं, सब समस्याएं शरीर से संबंधित है. All the problems that man faces today, they are all related to the physical body. मरे हुए व्यक्ति की कोई समस्या नहीं होती. A dead person has no problems. तो आपकी आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो, रिश्ते की समस्या, सब समस्या इस शरीर की. So whether you have financial problems, whether you have problems of relationship, ये शरीर खत्म हो गया तो मजे ही मजे हैं, फिर क्या. so they are all related to the physical body. When the physical body ends, then everything is well. तो जैसे जैसे शरीर भाव कम हो जाता ना, वैसे वैसे समस्या भी कम हो जाती. So just as the body consciousness reduces, then all the problems अब हम ध्यान में reduce as जाएंगे. well. Now we will go into meditation. अपना जो राइट हैंड है ना, इसका ये तलवा अपने तालू भाग पे रखो. Take your right hand and put the palm of your right hand on the crown of your head and press it gently. और हल्का सा दबाव दो. And press it gently और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ. and rotate it in a clockwise direction 3 times. उसके बाद में चित्त को तालू भाग पे रखो. Stabilize your chit, your attention at the crown of the head. और आंखें बंद कर लो और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ. Close your eyes and bring your hand down very gradually. मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. Chant the mantra, I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. I am a pure soul. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. I am a pure soul. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. I am a holy soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ. I am a pure soul. अपने चित्त को तालू भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो. Now stabilize your chit at the crown of your head and meditate for a short while.
We will now pray to Paramatma. हे परमात्मा, Oh Paramatma, कृपया मुझे please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization. हे परमात्मा, Oh Paramatma, कृपया मुझे please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization. हे परमात्मा, Oh Paramatma, कृपया मुझे please grant me आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। self-realization.
आध्यात्मिक केंद्र हो ये हमारी शुद्ध इच्छा है. It is our pure wish that Singapore becomes a center for spirituality. सिंगापुर एक आध्यात्मिक केंद्र हो ये हमारी शुद्ध इच्छा है. It is our wish that Singapore becomes a spiritual center. सिंगापुर एक आध्यात्मिक केंद्र हो ये हमारी शुद्ध इच्छा है. It is our wish that Singapore becomes a spiritual center. नमस्कार. देखिए समय के अभाव में हमने कम किया. कल से आपको ये 30 मिनट करने का है और जब तक 30 मिनट पूर्ण नहीं होते ना तो उठने का नहीं, अलार्म लगा के बैठो ना. Because of time constraints, we have done it for a short period of time today. But from tomorrow, you practice it for 30 minutes every day. You can put an alarm clock for 30 minutes, a timer. Until the timer doesn't go off, you do not stand up. प्रैक्टिस 45 दिन करो तो आपका क्या जाएगा? 22.5 घंटा जाएगा. So practice this for 45 days. What will you lose? 30 minutes every day, you will lose 22.5 hours. लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी. But in the 22.5 hours, your entire life will change. आपके जीवन में सकारात्मक चेंज आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा. करके देखो ना. There will be a positive change, a positive transformation in your life. Just try it. और कोशिश करो, सवेरे करो. सवेरे करोगे तो क्या होगा? दिन भर के गतिविधियों पे उसका प्रभाव रहेगा. And try to do it in the mornings. What will happen if you do it in the mornings is that it will affect and influence the rest of your day. बाकी किसी को प्रश्न पूछना तो पूछो. If anyone has any questions, you may ask now. We have 2 microphones set up at the front. If you have any questions, you may come to the front and queue up. प्रणाम गुरुदेव. एक सवाल है. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके माँ बाप इंडिया में है या किसी और देश में है, तो या सबको ये चिंता होता है कि कौन देखभाल कर रहा है उनका. क्या हम इस ध्यान के माध्यम से कैन वी मेक देम फील कंफर्टेबल? क्या कैन यू ट्रांसलेट दैट? सॉरी. प्रश्न क्या है इनका? उनका प्रश्न ये है कि कुछ लोग जो सिंगापुर में रहते हैं उनके माता पिता या कोई रिलेटिव्स इंडिया में होते हैं, तो क्या ध्यान के माध्यम से उन्हें कंफर्टेबल फील हो सकता है जो इंडिया में रह रहे हैं? नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे सेंटर्स है, वहाँ बता दो, हो जा सकते हैं. नहीं, जो वो ध्यान करते हैं यहाँ पर उनके माता पिता के लिए, कि उनके माता पिता को थोड़ी सुविधा मिले, वहाँ कंफर्ट मिले. देखो, तुम खाना खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे माता पिता खाना खाएंगे उनका पेट भरेगा. तुम खाना खा के उनका कैसे पेट भरेगा? So his question was that there are many people in Singapore who have parents who are living in India or elsewhere. So through meditation, if we did meditation here, would that help our parents be comfortable in those other countries? And Swamiji's response is that if you eat food, then it will fill your stomach. Will it fill the stomach of your parents? No. और मेरे सामने माता पिता नहीं, तुम आए हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं. So you have come in front of me, not your parents. So talk about yourself. पहले आप आपकी तो स्थिति एक अच्छी बनाओ, उसके बाद में उनके बारे में सोचना. So first make your own state good, and then after that you can think about your parents. उनको अपन रास्ता बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, चलना उनको ही पड़ेगा. So you can share the path, the way, but you have to walk on it yourself. आप यहाँ बैठ के उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. You can show them the way as well, but they will have to walk on it themselves. You cannot do anything from here. कौन से गांव में? वहाँ के सेंटर का उनको एड्रेस दो. Whatever town they live in India, you can give them the address of a center nearby. We have many centers in India. गुरुदेव, इससे जुड़ा एक विनती है. यहाँ सिंगापुर में जब भी हम हॉकर सेंटर या जब भी फूड कोर्ट जाते हैं, तो 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के बूढ़े लोग प्लेट क्लीन करते हैं, कचरा निकालते हैं. उनकी इकोनॉमिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो खुशी से जी सके. बस आपका चित्त उन पे गिरे कि वो बुढ़ापे में ठीक से कंफर्टेबली लिव कर सके.
आप अपने बारे में सोचो, अभी दूसरों के बारे में मत सोचो. अभी दूसरे के बारे में सोचने की आपका स्थिति नहीं. So his next prayer was to Swamiji that whenever he goes out to the hawker center to have some food, he sees that there are people who are aged, senior citizens, 70, 80, even sometimes 90 years old, who are working and cleaning plates, and their financial state is not that they can live comfortably. So he is praying to Swamiji that Swamiji blesses them with a better life, and Swamiji's response is that first look at yourself. Your state is not such that you can do anything for anyone. So improve your own state first. किसी की मदद करना हो तो पहले अपन सशक्त बनो. So first of all, before we can help anyone else, we have to become capable ourselves. मेरा आखिरी सवाल ये मेरे बारे में दीक्षा तो मैंने आपसे ली है, पर सपने में दूसरे गुरु आते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? So he said that he has taken Diksha from Swamiji, the formal process of accepting Swamiji as his guru. But in his dreams, he sees other gurus. Is that wrong? क्या? उन्होंने दीक्षा आपसे ली है, लेकिन सपने में और अलग अन्य गुरु आते हैं. तो देने दो, उसमें क्या ये गलत है? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है. His question was this wrong? And Swamiji is like, it's okay, just leave it be. There's nothing wrong with that. शुक्रिया स्वामी जी. I would like to kindly request. एक्चुअली दीक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो कर्म मुक्त अवस्था तक पहुंचना महत्वपूर्ण है. वहां अगर कोई पहुंच गया ना, फिर उसको दीक्षा का जरूरत नहीं रहती. Actually, the Diksha process itself is not that important. What is important that through that process one gets to the karma-free state. It is the karma-free state that is important, not the path that you have taken to get there. I have a kind request. We have a kind request to everyone. Our program has been ongoing for our members and followers for the last 3 days. So we are kindly requesting that the new people, the visitors here today, get an opportunity to ask the questions first. दूसरा ना, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है. लोग दोनों को मिक्स करके देखते, दोनों अलग अलग है. It is important to understand the difference between spirituality and religion. People often mix them and interchange them, but they are actually separate. और मेरे को ये सब जगह समझाना पड़ता. अभी मेरा नेपाल का दौरा है 20 से 30 तारीख तक. 22 तारीख को वहाँ के संसद में शिविर है. And I have to explain this again and again to everyone. I am going to Nepal after this program from 20 to 25th. And on 22nd, I have a session with the parliament. तो कोई भी संसद में करने आते हैं ना, बोलते हैं हम धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते. मैंने बोला देखो तो सही, इसमें धार्मिकता कौन सी? आज इतनी सारी बातें की, कौन से धर्म की बात किया? So whenever we go to arrange a program in the parliament or in official capacity, they always raise concerns that no, we don't want to hold religious programs. And I told them that just hold this session and look at what I have been talking about in the past. I never talk about any religion. Have we talked about religion today? No. तो कोई भी जगह संसद में करने आते हैं ना, अभी यूके में भी किया, जर्मनी में किया, उनको समझाना पड़ता है कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम. So whenever I have programs, we recently had a program at the House of Lords in the UK and in the Parliament in Germany as well, and in Sri Lanka. And I have to explain again and again that this is not a religious program, it is a spiritual program. अच्छे लोगों को आध्यात्मिकता और धार्मिकता का अंतर समझ में नहीं आता. Very good people with a high state, even they don't understand the difference between spirituality and religion. मैंने कितना सिंपल मापदंड दिया. कोई भी व्यक्ति अगर किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है तो समझ लो वो पहुंचा हुआ नहीं है. I have given you a very simple way to measure this, that if any person is talking about a specific religion, method of worship, that means they are religious but they have not reached up to spirituality. वो पर्टिकुलर उपासना पद्धति के सीढ़ी पे बैठा हुआ है. They are sitting on the steps of that particular religion, that method of worship. और जो आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच गया ना, वो किसी सीढ़ी की बात ही नहीं करेगा. And those who have reached the heights of spirituality, they will not talk about any specific method of worship. अब हिमालय में सब एक दूसरे को मिलते थे, अलग अलग उपासना पद्धति के लोग थे, लेकिन कोई उपासना पद्धति पे बात ही नहीं करते. So in the Himalayas, all the gurus who come together and meet each other, they all come from different methods of worship. But they don't talk about religion at all. They always talk about spirituality. हिमालय के सभी गुरुओं का एक ही मत था
जो प्रत्येक जन्म के साथ बदलती है उपासना पद्धति, उसको क्या महत्व देने का? And all of the gurus of the Himalayas, they believed in one thing, that the religion that changes with each birth that we take, why should we pay any more importance to it? तुम इस जन्म में एक उपासना पद्धति में जन्मे हो, जरूरी क्या अगले जन्म में उसी पद्धति में जन्मोगे? नहीं. So you may have been born into one religion in this birth. It is not necessary that you will be born in the same religion in the next birth. और उपासना पद्धति देके थोड़ी हम जन्मे हैं. जिस घर में जन्मा उस घर का उपासना पद्धति हमको चिपका दिया. And we have not been born with the religion ourselves. In the house that we are, in which we are born, we adopt the religion of that house. जैसे माँ की जो बहन है वो हमारी मौसी, हम मानो या मत मानो मौसी हुई. Just like our mother's sister becomes our aunt, whether we believe her to be our aunt or not. उसी प्रकार से ये घर में जन्म लिया, उसकी उपासना पद्धति चिपक गई. In the same way, in the house that we are born in, the method of worship becomes our method of worship. उपासना पद्धति देके हम नहीं जन्मे. We have not brought the method of worship with us when we were born. तो ये अंतर एक समझो, उपासना पद्धति अलग है, आध्यात्म अलग है. So understand this difference, that spirituality is different and religion and method और of सारी worship. नदियां जाकर के समुद्र को मिलती है, इसे सारे उपासना पद्धति जाके आध्यात्म में मिलते हैं. Just like all the rivers, they flow into the sea and become one with the sea. In the same way, all the methods of worship दोनों flow में into spirituality. दोनों में एक ही अंतर है. उपासना पद्धति में धीरे 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 आपके आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है. वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि आपको बुढ़ापे में कहीं पैसा मालूम पड़ता है, फिर बोलते हो राम 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 राम. अब बुढ़ापे में राम राम करके क्या होगा? So the process, the difference between the two is this one, that in the methods of worship, there is a process that you follow, and that process is so lengthy that you only realize when you are old, in your old age, and then you start chanting Ram 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 Ram. आप देखो ना, लोगों ने जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो बुढ़ापे में राम 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 करते मिलेंगे. And you will see that those people who have never believed in any method of worship and never chanted any holy names, in their old age they will start chanting holy names. और आध्यात्म में क्या है, आपका आत्मा जागृत कर दिया जाता है, फिर आपको सब ज्ञान आपके भीतर से होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है. इसको बाहर से उपदेश सुनने का जरूरत नहीं है, तुमसे बुरा काम होगा ही नहीं. And in spirituality, what happens is that your own soul is awakened within you, and after that you get all the knowledge from within, what you should do and what you should not do. There is nothing from outside left to gain. इसलिए धार्मिक व्यक्ति प्रगति करके आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा. That is why a person who follows a particular method of worship can progress and become spiritual, but a spiritual person will never become religious again. इसका प्रचार प्रसार अगली पीढ़ी तक करने की बहुत आवश्यकता है. And it is important to spread this awareness to the next generation. और ये मानसिकता पूरे दुनिया भर में फैली हुई है, उनको सब जगह जगह ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. And this mentality is across the world, everywhere, and I have to face these challenges everywhere. जब संसद में शिविर हो जाता ना, वो लोग रिलैक्स हो जाते, अरे हम तो समझे थे कि कोई धार्मिकता होगा, इसमें तो कोई धर्म का ही नहीं. अरे मैंने बोला करके तो देखो फिर. So after I complete my program in the parliaments, everybody relaxes that, oh, there was no religious talk, nothing about religion that was spoken in your program. और कोई प्रश्न? Are there any other questions? वंदन बाबा स्वामी, आपने जैसे बताया कि आपके अनुभव में आपको हिमालय में सब जगह गुरु मिले, तो इस पथ पे स्त्री क्यों कम दिखती है, क्यों नहीं है? उसका कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कारण है, क्या है? अच्छा प्रश्न पूछा, बता दो. She has, her question is that Swamiji has shared his experience of the Himalayas and how he has attained self-realization and his experience in the Himalayas. So her question is that why are women, not so many women there, and so many women on this path? देखिए, जितने भी गुरु हैं वो आकाश से हिमालय में नहीं टपके. So all the gurus in the Himalayas, they did not fall from the sky. वो इसी समाज से गए. They have gone to the Himalayas from the society itself. और मनुष्य की एक मानसिकता है ना कि आध्यात्मिक स्थिति में बाधक है स्त्री. But the mentality of mankind
is that females, women, are an obstacle to spiritual progress. वही मानसिकता लेके वो हिमालय गए. And they have gone to the Himalayas with that mentality. और उसके बाद में उनका ओरा रहता है 100 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक उनका ओरा रहता है. And then they develop an aura in the Himalayas that spans 100 to 200 kilometers. और कोई भी स्त्री मेरे ओरा में नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं. And they make this resolution that no female should come in my aura. और जब सालों तक ऐसा ओरा बनाते ना, उसके बाद में वो चाह करके भी उस एरिया के बाहर नहीं आ सकते. And after developing this aura for many years, then even if they wish to, then even then no female can enter their aura. तो ऐसा ओरा मेरे गुरु ने भी बनाया था. वो उन्होंने भी सोचा था कि स्त्री बाधक है, तो मेरे एरिया में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए. तो कोई बेचारी स्त्री कैसे जाएगी उनके एरिया में? So even my gurus had developed this aura, and they had decided that they had restricted that no female can enter my aura. So how will the women make it there? लेकिन गुरु ने जब समाज में मुझे भेजा ना, तो उन्होंने बोला ये मैंने मेरे जीवन में गलती की थी. But when my guru sent me back into society, they told me that I have made a mistake in my life. आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं. In the spiritual field, women and men are equal. तो जो गलती मैंने की, वो गलती तू जाके मत करना. So the mistake I have made, you do not make that mistake when you go into society. तो हमने वो गलती सुधारने का कोशिश किया. So I have attempted to make that mistake correct that mistake. हमारा कोई भी सेंटर स्त्री के बिना नहीं है. We have no centers that are operated without women. हमारी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी स्त्री है. Even the managing trustee of our trust is a यानी woman. सर्वोच्च पद पे स्त्री है. In every high post we have women. और आज विश्व में भी इतना फैला है ना, इसके कारण स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है. And seeing that it has spread throughout the world now, the women have given a very big contribution to this work. माने स्त्री बाधक है, ये पुराना क्या बोलते हैं धारणा है, पुराना विचार है, लेकिन वो तोड़ना पड़ेगा. So the belief that women are an obstacle in spirituality is an ancient belief. We need to break that. हम जीवन में ऐसे कुसंस्कार लेकर के बहुत सारे पैदा होते हैं और सालों तक चलते रहते हैं. हमको उसका कोई अनुभव नहीं देता. We are born into this world with such wrong beliefs, and we continue to believe in them. They're not always correct, and we don't even realize that we're doing it. नमस्ते गुरुजी. काफ़ी हद तक ये मतलब समझता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो कहीं ये सब यहाँ से छूट के जाने के लिए मिला है. माइक के पास आके बोलो, सुना ही नहीं आता. मैं 70 साल का बुढ़ा हूँ. सॉरी. हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो काफ़ी हद तक समझ आता है कि इस म्हणजे ह्या पसाऱ्यातनं कुठून तरी सुटून जाण्यासाठी हा जन्म मिळाला आहे. पण म्हणजे जोपर्यंत ध्यान करतो तोपर्यंत ठीक, पण नंतर पुन्हा जेव्हा रुटीनमध्ये आपण येतो तेव्हा पुन्हा सर्व विसर पडतो सगळ्या गोष्टींचा. तर ह्याला पकडून कसं धरायचा? इनका प्रश्न है कि ध्यान करते उतने समय अच्छा लगता है, बाद में फिर वही ये सब वातावरण रहता है. So his question is that after he's done meditation, he feels very good, but then later on the environment feels the same. इसका उत्तर है ये ध्यान करते ध्यान होता नहीं है. The answer to his question is that he tries to do meditation. अगर ध्यान करोगे ना, ध्यान होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पूरे दिनचर्या पे पड़ेगा. So if you go into a good state of meditation when you're sitting for meditation, then the effect of that will last the entire day. मैं भी कोई दिन भर थोड़ी ध्यान में बैठ रहता हूँ, सिर्फ आधा घंटा सवेरे बैठता हूँ ध्यान में, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन भर रहता है. Look at me, I don't sit in meditation the entire day. I only sit for 30 minutes every day, but the effect of it is felt throughout the day. मैंने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में शिविर लिया डॉक्टरों का. Once I took a program for the doctors at the Ahmedabad Medical College. उसमें से 65 डॉक्टर दांडी के आश्रम में आए. And 65 doctors who had attended that program came to Dandi. उसमें एक डॉक्टर ने बोला, स्वामी जी मेरे को ना रविवार को छुट्टी रहती है, उस दिन मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूँ, तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी क्या? They came to my ashram in Dandi, and one of the doctors said that on Sundays I have holiday, I have a day off. So on Sunday I can meditate for 8 hours. Will that help me progress spiritually? मैंने उसको समझाया कि शरीर को मोबाइल समझ. So I explained to him that imagine that your body is a mobile phone. और अगर मोबाइल
2 घंटे में चार्ज होकर घुसेड़ के रखा तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा. If the mobile phone, the charging capacity for the battery is 2 hours, if you charge it for the entire night, will it increase the charge? No. ठीक उसी प्रकार से ये शरीर रूपी मोबाइल को ही चार्ज करने के लिए आधा घंटा ध्यान काफी है, लेकिन ध्यान में रेगुलरली होना चाहिए. So in the same way, this body in the form of the mobile phone, it just requires 30 minutes every day, not anymore. But you have to do it regularly. और दूसरा पर्सनल तुम्हारी बात करो ना, तुम तुम्हारे जीवन में तृप्त नहीं हो. And I will talk about you. Your personal problem is that you're not जो व्यक्ति satisfied. तृप्त नहीं, उसका ध्यान कैसे लग सकता है? So a person who is not satisfied, how will they get a good meditation? तृप्त नहीं मतलब कुछ मिलना चाहिए भाव है, तो आप राइट साइड में हो. जब राइट साइड में हो तो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान तो बीच में लगता है. So by dissatisfied, I mean that you have this desire that you have to attain something, that you have to acquire something, and you are on your right side. So if you are on the right side, how will you come to the center and be balanced? एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है. The field, the sphere of yoga is so vast that you can be sitting in one place and come to know every information about a person who is sitting around the world, on the other side of the world. अब लंदन में एक वीनस टीवी पे कार्यक्रम रखा गया था मेरा. मैं बैठा था लंदन के स्टूडियो में और दुनिया से लोग मेरे को पूछ रहे थे, स्वामी जी मार्गदर्शन कीजिए, बस. और मैं उसके बारे में उसके प्रॉब्लम जान लेता था, उसका निदान बता देता था. We were sitting, when I visited London, we held a program in Venus TV. I was sitting in the studio in London and people from all around the world were calling in and they were just saying, asking that Swamiji, please guide me. And through my chit, I used to come to know everything about them, their problems, and also give them solutions. तो जो अनाउंसर था ना अनवर राजा, वो बोले भारत से महान ज्योतिषाचार्य आ गए, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब बता देते. And the announcer, his name was Anwar Raja, he introduced me that there is a very big astrologer who is visiting from India. Even if you don't tell him your name, he knows everything about you. मेरे हाथ में माइक जब आया ना तो मैंने बोला मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. जिस प्रकार से अंगूठे की छाप प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के अलग है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के विचार अलग है, प्रत्येक मनुष्य का ओरा अलग है. तो जो भी व्यक्ति पूछता है ना, तो उससे मैं कनेक्ट होकर उसका ओरा देख लेता हूँ, उसका हवामंडल देख लेता हूँ, उसकी स्थिति देख लेता हूँ, उसके प्रॉब्लम देख लेता हूँ, उसका निदान बताता हूँ. So when the microphone was handed to me, I said that I am not an astrologer. Just as every person has a unique fingerprint, thumbprint, in the same way every person has a unique aura. So what happens is when they ask the question, I connect and I read their aura and then I come to know everything about them and I tell them solutions to और their उसके लिए problems. इतना कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, ऐसे मालूम पड़ जाता. And I don't have to do anything special for it. I just come to तो know वैसे it. आपके लिए एक ही मैसेज है, जिस जगह हो वो तृप्त महसूस करो. मेरे को मिलना चाहिए भाव छोड़ दो, तो उसके कारण राइट साइड में जा रहे हो और फिर ध्यान नहीं लग रहा. ध्यान करते हो लगता नहीं. So there is only one message for you, is that wherever you are, whatever situation you are in, be satisfied with it. Because if you desire more things, then you will go to the right side and you cannot get a good state of meditation at the right side. और भले ही तृप्ति नहीं हो, लेकिन परमात्मा को रोज धन्यवाद दो. परमात्मा तूने मुझे खूब दिया है, मैं एकदम सुखी हूँ, मैं एकदम प्रसन्न हूँ. ऐसा झूठा ही बोला करो नाटक, एक दिन सच हो जाएगा. So even if you don't believe that, even if this dissatisfaction remains, just pray and be grateful to Paramatma. Just act and say this physically, that Paramatma, I'm so thankful to you. You have given me a lot and I am very satisfied. Then one day, gradually, that will have an effect on you and you will start believing it. वो भी बोलना बहुत कठिन है. जो अंदर असमाधान है, तब नहीं बोल सकते कि मैं समाधानी हूँ. And that is also very difficult to do when you have dissatisfaction within you. It is very hard to say the words that I am satisfied. तो ऐसा करो, फिर चेंज आएगा. But continue to say this out loud and the change will happen. मेरे को तो कभी-कभी लगता है मंदिर में कुछ मांगने को जाना ही नहीं चाहिए. I feel that people should not go to temples to ask for anything. मैंने मंदिर में हम मांगने के लिए गए, इसका मतलब क्या? तुम्हारे जीवन में तुम्हारी एनर्जी कहीं कम पड़ रही है, तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए, इसलिए तो मंदिर में जाते हो. But when we go to the temples to ask for something, that means that you are lacking in energy to resolve your own problems. That is why we go to the temples to ask for. मंदिर में भी जाके अगर मांगा तो तुम्हारा चित्त तुम्हारी समस्या पे, एनर्जी पे कहाँ है? But if we go to the temples and we are asking for things to solve our problems, that means our attention, our chit is on our problems, so we are not balanced enough to receive the energy. एकदम खुश होकर मंदिर में गए, हे परमात्मा तेरे को धन्यवाद देने को आया हूँ, ऐसा सोचोगे तो क्या होगा? तुम्हारा रिसीविंग बढ़ जाएगा, उसका एनर्जी लोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. But go to temples with a very
happy demeanor and say that I'm very happy today, I'm very grateful for everything you've given me, and what will happen is that your receiving capacity will increase and you'll लेकिन be इतना able खुश to होकर receive the कितने लोग जाते हैं energies. मंदिर? But how many people go to temples like that? सब रोते रोते ही जाते. Everyone goes to temples when they're sad and crying. मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसे ही रोते जाते. And they're always asking that I want this or I want that. इसलिए देखना मूर्ति के सामने एकदम खराब एनर्जी रहता है. And that is सब why मंगते बैठे रहते हैं. And that is why in front of the idols, in front of the statues in the temples, the energy is very bad because everybody is sitting there मूर्ति के asking. पीछे जाकर के देखो अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे. You go to the back of the statue and you will see that the vibrations there are quite better because then nobody goes to the back. मंगतों को लगता है पीछे जाएंगे तो नहीं सुनेगी मूर्ति. Because those people who go to ask for things, they feel that if they go to the back side that they will not get anything. जबकि आवामंडल ना पूर्ण गोल रहता है. अगर 10 फीट आगे तो 10 फीट पीछे भी रहता. But the aura field is circular and it's all around. So if it is 10 feet in front, it is also 10 feet behind. ठीक है, समाधान व्यक्त करो, ठीक होगा. So just express your satisfaction. नेक्स्ट. Next question, please. Namaskaram, Swamiji. I did experience certain healing in your presence, so thank you very much. Can I still shamelessly ask for your blessings, please? गुरुदेव, उनके आपके सानिध्य में एक हीलिंग जैसा महसूस हुआ, हीलिंग हुआ, तो उसके लिए वो धन्यवाद बोल रही है. हाँ, और वो आपके आशीर्वाद मांग रही है. नहीं, आशीर्वाद गुरु के आशीर्वाद गुरु ने जो बताया ना वो करने में. The Guru's blessings are in you obtain Guru's blessings when you do. जैसे मैंने बोला ये 45 दिन ध्यान करो, 45 दिन का अनुष्ठान करो, उसमें एकदम पैकेज है वो आशीर्वाद का. So I have told you today. The Guru's blessings are within what the guidance that Guru gives. So I have asked you today to do meditation for the next 45 days, and if you do that, then you receive the blessings automatically. दूसरा एक बताऊं कि आशीर्वाद ऐसा नहीं है ये 5 रुपए निकल के दिए चलोगे, ऐसा कोई भौतिक चीज है कि आशीर्वाद. And blessings are not something physical like a $5 note that I can take it out of my pocket and जैसे give पानी you. का झरना है वो बह रहा है जोर से. Now imagine there is a waterfall where the water is flowing very उसके heavily. सामने तुम घर बनाओ, रोज प्रार्थना करो, हे झरने देवता मेरे को निला दे, एक झरने देवता मेरे को निला दे. वो निलाएगा क्या? So you build a house in front of the waterfall and you stay in your house and you pray constantly to the waterfall that please come and cleanse me, come and bathe me. Will the waterfall come into your house and do it? No. क्योंकि झरना निसर्ग के वो अपने स्थान पे ही बहेगा, तुम्हारे घर में नहीं आएगा. Because the waterfall is natural in its natural form and place. It will remain in its place. और तुम झरने के नीचे चले गए तो स्नान घटित हो जाएगा. And if you go underneath the waterfall, then your bath will occur automatically. गुरु के भी आशीर्वाद झरने जैसे रहते हैं, वो कुछ दे नहीं सकता, कोई काम का ही नहीं गुरु. तुम वो जो बोल रहे हो वो सुनोगे तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद. And the Guru's blessings are like the waterfall. He is not able to give or do anything. If you follow his teachings, then you get the blessings automatically. तो 45 दिन ध्यान कर, उसमें सब आशीर्वाद. So just meditate for the next 45 days and you will receive all the blessings. ये सब समझ में आता है कि ध्यान करना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझसे बैठा नहीं जाता है. खड़े रह के करो. एक बताऊं क्या? The question was that I understand that it is good to meditate and sit for meditation, but I'm not able to sit. So Swamiji said, then stand and do it. नहीं, देखो मैंने इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, किस समय करो ये कंडीशन नहीं है. So I have not given you any conditions that. कोई सी अवस्था में करो वो कंडीशन नहीं है. I have not made the condition that you have to do it in this कोई particular कंडीशन ही नहीं, करो बस, महत्वपूर्ण है. or in this state, just that you do it. और दूसरा जिनको नीचे नहीं बैठते आता ना, उनके अंदर इतना तनाव है, इतना टेंशन है कि पूरे शरीर पे तनाव है, इसलिए उनको बैठते नहीं आ रहा है. अगर ध्यान करेंगे तो बैठना चालू हो जाएगा. So those people who are unable to sit down on the floor, most of them, their bodies are so stressed and strained. That is why they find difficulty sitting down. But as they continue to sit in meditation, slowly their bodies will loosen up. दूसरा जमीन पे बैठोगे ना, उसका एक अलग इफेक्ट है.
But there is a different effect if you sit on the floor and do your meditation. एक बार इंग्लैंड में एक पादरी के घर में बैठा हुआ था. Once I was in England and I was sitting at the house. तो मैं भी सोफे पे बैठा था, वो भी सोफे पे बैठा था. So I was sitting on a sofa and he was also sitting on the sofa. उसको मैंने पूछा वाइब्रेशंस महसूस हो रहा है हाथ में? तो बोले हाँ हो रहे हैं. And I asked him, are you able to feel the vibrations in the palms of your hands? He said yes. उसको मैंने बोला जमीन पे बैठा. So I told him, sit on the floor. जमीन पे बैठा. बोले स्वामी अब बहुत जोर से हो रहा है. So when he sat on the floor, he said, Swamiji, I can feel the vibrations even more strongly. तो मैंने उसको समझाया भारतीय संस्कृति में गुरु के समकक्ष नहीं बैठते. So I explained to him that in the Indian culture, one does not sit at the same level as the guru. ताकि एनर्जी ऊपर से नीचे बहती है. Because the energy flows from up downwards. दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में सारे अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठे थे. ये पादरी महाराज जमीन पे बैठे थे. उनको 1 मिनट में समझ में आ गया था. So the next day we had a program at the Theosophical Society. All the British people were wearing suits and boots and dressed up, and they were sitting on seats. And this priest, he sat down on the floor. He understood what I was trying to tell him in a moment. इसलिए ध्यान करोगे ना तो जमीन पे बैठोगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा. So when we sit for meditation, if you sit on the floor, the effect will be better. और अगर बैठते नहीं आ रहा तो नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो. But if you are unable to sit on the floor, then you can sit. या सोते सोते ही ध्यान करो तो भी चलेगा. Then you can sit on the chair, but have your naked feet touching the ground, or you can sleep and you can still meditate. अच्छा दूसरा ध्यान को छोड़ दो, एक बताता हूँ. And now let go of meditation. 30 मिनट ऐसी जगह बैठो जब तुम्हारे सामने टीवी नहीं हो, रेडियो नहीं हो, पुस्तक नहीं हो, कोई बात करने को नहीं हो, अकेले बैठिए. So I will tell you something else to do now. Sit for 30 minutes in such a place that there is no TV, no radio, no nothing in front of you. और खुद गाना भी नहीं गाने का, सीटी भी नहीं बजाने का. So you don't sing a song, you don't whistle. ऐसे 30 मिनट एकांत में बैठ के देखो. Just sit in isolation for 30 minutes. तो ध्यान बाद में छोड़ो, पहले इसका प्रैक्टिस करो. ये भी नहीं बैठा जाएगा. So put meditation aside. Just sit like this for 30 minutes. क्योंकि हमको शांति से बैठने का आदत ही नहीं है. And you won't even be able, you'll find it difficult because we are not habituated to sit लेकिन like फिर भी that. अगर बैठे ना तो कुछ दिन बाद तुमको महसूस होगा विचार कम होना चालू होगा. But if you still sit like that for 30 minutes, then after a few days you will experience that your thoughts have reduced. क्योंकि ना अपने खुद के विचार कम रहते, लोग आके अपने में कचरा डाल के जाते. Because our own thoughts are very less. Other people that we meet, they put their rubbish into us. तो ध्यान के पहले ये एक प्रैक्टिस करके देखो. So before sitting for meditation, you can practice this. अपने को पेट भरना है तो खाना तो पड़ेगा ही. दूसरा खाएगा अपना पेट भरेगा ऐसा नहीं होगा. If we want to fill our stomachs, then we will have to eat. It's not that our stomachs will be filled if someone else is eating. Pranam Swamiji. I'll ask my question in English. It's easier to explain, so you can translate to him. So Swamiji was saying like you try to move from being religious to being spiritual. I feel we all deeply associate being religious, like when we celebrate festivals, like all the different festivals that we have in our different cultures. So sometimes what happens is like इनका प्रश्न क्या है? गोल गोल खूब सारा बोला कि मेरे समझ में कुछ नहीं आता. एक वाक्य में प्रश्न होना चाहिए. Swamiji is saying that sometimes we ask questions, they're such lengthy questions, we put context around it. Please ask the question in one line only because it's difficult to then understand. ऐसा लंबा लंबा तुम तो प्रवचन देने लग गए. It's difficult to then understand what the actual question is when you give a lot of context. So just say it in one line. Yeah. एक लाइन में प्रश्न पूछो. Okay. Is it okay to then not celebrate festivals or celebrate them in a minimal fashion? स्वामी जी उनका प्रश्न ये है कि अपने धार्मिकता और आध्यात्मिकता के बारे में बात की कि वो अलग अलग है. तो जैसे हम जश्न वो फेस्टिवल मनाते हैं जो धार्मिक के जैसे दिवाली है वैसे सब कुछ, क्या वो हमें कम करना हो? क्या जैसे हम धार्मिक फेस्टिवल्स मनाते हैं घर में अभी इंडिया में, तो क्या वो कम करना चाहिए? मैं दारू पीने को मना नहीं करता हूँ, धार्मिक फेस्टिवल मनाने को क्यों बंद करूँ?
So I hope I translated that correctly, that should we celebrate these festivals less, right? So Swamiji is like, I'm not even asking you to stop drinking alcohol. So will I ask you to stop anything else or reduce anything else? So continue doing what you're doing. Actually, अपने को समाज को लेके चलने का है, अपने को रिश्तेदारों को लेके चलने का है, तो उनको दिखाने के लिए सब करना ही पड़ेगा ना. So we want to live in society, and we want to work with everyone else in society as well. So it is okay to do what everyone else is doing because we want to maintain the relationships with them. अब तो बता, माँ सर्कस देखने बच्चों को लेके जाती है, माँ को इंटरेस्ट है क्या सर्कस में? नहीं, लेकिन बच्चों के लिए लेके जा रही है. So an example is that a mother takes her children to the circus. The mother is not interested in the circus itself and she doesn't want to go. But she goes there, she takes the children. It is because the children are interested. लेकिन अंदर से महसूस करती है सर्कस में कोई रखा नहीं है, लेकिन बच्चों के मनोरंजन के लिए ले जाती है. And on the inside she feels that there is nothing to see in the circus. But she goes there anyways and she takes her children because the children are interested in it. तो हमारे आश्रम में भी ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए, प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज, सब है. So in this we also have these different departments, primary, high school, middle school. तो वहाँ पे यज्ञशाला भी है. So in our ashrams we have all these different जिनको things. यज्ञ करना वो यज्ञ करते, यानी जिसको जो करना वो सब करो, लेकिन आखिरी में क्या है, ध्यान महत्वपूर्ण है. ध्यान कॉलेज का ज्ञान है, इसके आगे कुछ नहीं. So in our ashrams also we have all these different things as well. We have a Yagyashala where we do our Havan, the fire ceremony, and other things as well. So for those who are interested in it and like it, they can still do it. But the goal, the objective is to reach the end, the college state, and that is meditation. क्या कर्मकांड कर रहे हैं उधर महत्व नहीं, महत्व है आप क्या समझ रही है, अंदर से क्या फीलिंग है आपकी, वो देखो ना. It is not important what you do outside, physically, externally. What's important is what are you believing on the inside. तो इसमें कुछ छोड़ने का नहीं है, लेकिन अपने अंदर से क्या फील करता हो महत्वपूर्ण करो. So you do not have to give up anything. It's how do you feel inwards. अब जैसे मैं भी किसी शादी में जाता था ना, तो वो कोने के अंदर भी कोई रिश्तेदार नहीं आता. Whenever I used to go for a wedding function, whichever corner I was in, no relative would come in that place. तो सब रिश्तेदार सोचते हैं ये ज्ञान की बात करेगा. Because all of my relatives used to think, तो oh, he will मैंने start सारे talking about रिश्तेदारों को इतना बोर किया था, मेरे आसपास भी कोई नहीं आता. Because for some time I had bored by talking about meditation. All my relatives were so bored that they don't even come next to me. तो जो गलती मैंने की वो तू मत कर. So I am telling you not to make the same mistake I did. अब मैं सोचता हूँ अगर वो गलती मैं नहीं करता तो वो मेरे साथ में रहते तो आज ध्यान सीखते, मेरा एक भी रिश्तेदार ये मार्ग में नहीं है. Now I'm thinking that I made a mistake because if I hadn't talked about meditation, then we would still be close. क्योंकि मैंने ध्यान की बातें कर करके उनको एकदम सड़ा डाला. So they would still be with me, and if we were close, then they would have learnt meditation and might have been in this path. But none of my relatives are in this path. और तू सोचना 30 साल से समाज में ध्यान 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 लेके घूम रहा हूँ, बाकी कोई समाज कार्य नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. So just imagine that for the last 30 years, I have been only teaching one thing: meditation, meditation, meditation. I have not done anything else, not even social work. खुद भी नहीं करता और करने भी नहीं देता. I don't do any social work myself, and I don't allow anyone else to do it. आश्रम में कोई सोशल वर्क की बात होती है, मैं बोलता मेरे मरने के बाद में करना. Whenever anyone brings up social work in my ashrams, I tell them that you can do that. क्योंकि गुरु के मरने के बाद में खूब पैसा आता, क्या करेंगे, दांत का हॉस्पिटल, आँख का हॉस्पिटल, नाक का हॉस्पिटल चालू करो. Because after my death, then there'll be a lot of money and funds remaining. So what can they do? They can create hospitals like eye hospitals, dental hospitals. तो दूसरा ध्यान के अलावा कुछ नहीं होता. There is nothing apart from meditation. तो इसलिए खुद ध्यान क्या करो, सामने वाले क्या कर रहे हैं उनको उनका करना. So just meditate. It doesn't matter what. और किसी को बोर मत करना ध्यान के. But don't bore other people by talking about meditation. Thank you, Swamiji. मेरा क्या कहना है, तुम लोग पोस्टर बनो, मतलब तुमको देख के तुम्हारे रिश्तेदारों ने पूछना चाहिए, अरे तू इतनी शांत कैसे रहती है, तू इतनी सुखी कैसी है, तू आनंदी कैसे रहती है, ये पूछना चाहिए. फिर उसको बताओ कि ध्यान करते हो इसलिए. See, you can become the poster for meditation. So when you yourself, your state increases, you'll be so happy and peaceful. So other people will see that you're so happy and peaceful all the time. And then they will ask you, how are you managing to stay happy and peaceful all the time? And then you can tell them that I do meditation. We will have last 3 questions now. We are coming to the end of the program. Last 3 questions.
Please ask your question. कितने बजे हॉल खाली करना है? जी नहीं, विदेश में पूछना पड़ता है. गुरुदेव, अभी आखिरी 3 प्रश्न होंगे. हाँ. प्रणाम गुरुजी. मेरा प्रश्न यह है कि हमें जीवन का उद्देश्य पता है, जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति करके मोक्ष पाना है, लेकिन जीवन का कार्य कि हम यह कैसे करें, संन्यास मार्ग में जाए, गृहस्थ में रहे, तो कैसे करें वह करना है. So his question is that we know the purpose of our lives. The purpose of our lives is to progress spiritually and attain moksha. But we don't know how to do that. Do we become ascetics? Do we leave the society? Or do we become family people and do it? ये प्रश्न का उत्तर मैंने खूब डिटेल में अभी रिट्रीट में दिया है. I gave a very detailed answer on this very question during the retreat we've had in the last 2 days. और वो उत्तर नहीं है, मेरे 70 साल का अनुभव है. And it's not just an answer that I'm telling people. तुमको सिर्फ शॉर्ट में समझा देता हूँ. It is backed by the experience, my own experience of the last 7 देखिए, years. जैसे ये जमीन है, हाँ, जमीन के नीचे एक आधा बीज गया. So I will tell you in short. Just imagine this is the earth level. और बीज टूटा, फूटा, और उसके बाद में उसमें से अंकुर निकला. So there is a seed that's sowed in the earth. It sprouts. और बीज के रूट्स निकले. And the roots come out. तो बीज यानी एक व्यक्ति जिसने शादी की, जो गृहस्थ हो गया. So the seed is a person who has gotten married and has a family. और बीज फूटा यानी क्या, अपना शादी जैसे की वैसे अहंकार टूट जाता है. And the moment it sprouts, it loses its identity. क्योंकि अपना अस्तित्व कुछ नहीं रहता है, जो बीबी बोलेगी वो करना पड़ता है. And in the same way, when man gets ये married, 70 साल का अनुभव पे बोल रहा हूँ. just in the same way, when man gets married, his identity doesn't remain anymore because he has to listen to his wife and follow what the wife says. अपना कुछ मत नहीं रहता है. So his own identity and desires don't remain. तो बीज जब टूटता है ना, तो उसके बाद में ये स्थिति होती है गृहस्थ की. So this is the situation of a family man, that when it sprouts, his identity doesn't remain. उसके जो रूट निकलते हैं, रूट यानी बाल बच्चे. So when the roots come out, the roots, by roots I mean children, grandchildren. लेकिन वो उसके बावजूद भी जमीन से ऊपर आता है, उसको 2 पत्तियां उगती है. And despite that, the stem comes out up front from the ground and grows upwards. और उसके लिए पूरा आकाश पड़ा हुआ है. And it reaches, and the entire sky is available. माने चाहे जितनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, जबकि उसके रूट नीचे जड़े हुए, जमे हुए. And he can do progress. It can grow as high as it wishes, despite its roots being in the ground. ये स्थिति सामान्य गृहस्थ की रहती है. And this is the state of the ordinary family man. माने गृहस्थ व्यक्ति वो व्यक्ति है जो जितनी चाहे उतनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है. Meaning a family man is that person who can get to as high spiritual state as he लेकिन wishes. उसको काम के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि वो काम सुख भोग चुका रहता है. But he will not get lustful and desireful thoughts because he has experienced and lived that. एक बीज वो है, अब दूसरा बीज वो है जो एकदम हवा में उड़ गया. So that is one type of seed. The other seed is one that has flown away in the और wind साधु बन गया. and became a saint. हो गया. ascetic. मैंने घर का कोई विवाद था इसलिए साधु बन गया, प्रेमिका मर गई इसलिए साधु बन गया, पत्नी मर गई इसलिए साधु हो गया. मैंने कोई तो भी जीवन की ऐसी घटना घटी जिससे वो साधु हो गया. And it could be for any reason that he became an ascetic. Maybe there was some conflict in the home and he abandoned his family and society. यानी उसने संसार छोड़ा नहीं है, लेकिन संसार छूट गया. Or maybe his wife died or his lover died and then he's तो gone जिस to प्रकार become से an ascetic. गुरुत्वाकर्षण की शक्ति खींचती है ना, वैसे काम शक्ति खींचती है उस साधु को. भले वो 90 साल का हो जाए, वो बोलता है स्वामी जी काम के विचार आते हैं, ये समस्या है. So it's not that he has chosen the life of asceticism, but it's just happened that the society has been left. But even when he's an ascetic, even in old age, he still has lustful thoughts. And these kind of people tell me that, Swamiji, we have the problem that we have lustful thoughts. और तीसरा एक बीज है जिसने पूर्व जन्म में ये सब भोग लिया है. And the third type of seed is one that वो इस जन्म में शादी नहीं करेगा, संसार नहीं बसाएगा, कुछ नहीं, लेकिन वो अध्यात्म में भी नहीं जाता. has experienced the happiness of a family life in their past birth. So in this birth, they will not even get married or be with the family, but they also don't come onto the spiritual path. तो बीज को 3 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं. So you can distribute, separate the तो seeds सबसे in 3 अच्छा parts. गृहस्थ मार्ग है जो तृप्त होकर के आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, उसके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है. So the best path is that of a family person
that has experienced the happy family life and after being satisfied came into this path and can progress spiritual. ये मेरे को आए हुए अनुभव है। 90 साल के साधु मेरे को बोलते हैं कि स्वामी जी काम के विचार आते हैं। So this is my experience. There are saints who come to me who are 90 years old and they tell me that Swamiji, we still get lustful thoughts. और ये कोई जवान साधु नहीं पूछता, बुढ़ा है जिसके कब्र में पैर लटक रहे हैं, वो बोलते हैं काम के विचार आ रहे हैं। So these are not young saints. These are saints who are so old, 90 years old, who are half dead. कारण क्या है? जवानी में जब मसल स्ट्रांग थे ना, तब तो उन्होंने अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया। What is the reason? Is that when they were young, their muscles were strong, so they were able to control these desires. और जब बुढ़ापे में सारे मसल्स वीक हो गए, तब विचार आना चालू हो गए। So but in their old age, their muscles have become weak now, and all these lustful thoughts have started तो उससे अच्छा गृहस्थ है ना, सब कुछ करके वो तृप्त हो चुके, निकल चुका है। So it's better than that. The saints is the family man who has experienced everything. He has become satisfied and then come onto this path. So he doesn't even get thoughts of. गृहस्थों को भी जीवन में खूब सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, लेकिन वो भागता नहीं है, डटा रहता है वहाँ पे। A family man also has to face many problems in life at home, but he doesn't abandon that and run away into the jungle. पत्नी से झगड़ते रहता है, लेकिन रहता वही है। He keeps fighting with his wife, but he remains in the home. ऐसा बोलते हैं कि शादी होती है ना, शादी के बाद में दोनों का रिश्ता ऐसा रहता है 63। So what they generally say is that when a couple gets married, their relationship is like 63 facing each other. 45 से लेकर 65 तक 36। So from the 45 years of age to 65, they become opposites. और like 65 के बाद में फिर 36, क्योंकि बुढ़े को बुढ़ी और बुढ़ी को बुढ़ा कोई रहते नहीं। After the age of 65, they come together again. Then it is only the old woman and the old man for each other. तो ये मेरे जीवन के आए हुए अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। These are my experiences from my life that I'm sharing with you. अब तुम ये मापदंड लगा के देखो। Now you can use this measure for yourself. तो इसलिए गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो साधु को भी चलाता है, सन्यासियों को भी चलाता है, आश्रमों को भी चलाता है और खुद को भी चलाता है। So the family man is that man who is contributing in many ways to society. He is also contributing to ashrams and helping them और progress. बच्चे पैदा करके प्रकृति को भी योगदान देता है। And he is also giving birth to children and progressing the cycle of life and nature. और ये कार्य वो साधु नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो मेरे को हिमालय से संसार में भेजा है। But the saints cannot do this and that is why the gurus of the Himalayas have sent me into society. तो इसलिए ना कई साधुओं के मन में विचार आते, गृहस्थ धर्म अच्छा है कि नहीं, एकदम बढ़िया है। So many people have this thought in their mind that is it better to be an ascetic or better to be a family man. लेकिन गृहस्थी में रहो, लेकिन कमल के फूल जैसे रहो। But remain in society, but remain as the lotus flower. जैसे कमल का फूल रहता कि नहीं रहता कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग कमल के फूल में नहीं रहता। The lotus flower grows in the murky soil itself, but none of that mud gets onto the flower. अब साधक का संसार तो 5 लोगों का, 6 लोगों का, मेरा तो लाखों लोगों का संसार है, उसके बावजूद भी किसी के बीच में नहीं रहता हूँ, आधा घंटा अकेले। So family man's life and family will be 5 people, 6 people, but my family is the entire world. There are people from around the world, and still I don't live within them. For 30 minutes every day I spend in isolation. तो सबके बीच में रहो, लेकिन किसी के बीच में मत रहो। So stay in society, but don't stay within everything. जैसे नाव रहती है कि नाव नदी में रहती है, लेकिन नदी नाव में आती क्या? नहीं आती है, बस वैसे ही। It's like the boat in the river. The boat is in the river, but the river is not in the boat. तो संसार रूपी नदी के अंदर रहो, लेकिन नाव जैसा रहो, संसार को अपने अंदर मत आने। So live in society, but live like a boat on the river. Don't let the society come inside of you. अब समझ गए मेरे को लगता। Have you understood now? Okay. We will have last question now. गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में। She has bowed to Swamiji and asked, Swamiji, please guide me. And Swamiji has said, you do not have satisfaction in your life. क्या नहीं मिला है? What have you not received? एक्चुअली ना ध्यान के अंदर प्रगति के लिए सबसे पहला प्रश्न है समाधान। जो परिस्थिति, जो स्थिति है, उसके अंदर तुम स्थित हो जाओ,
तब जाके प्रगति हो सकती है, नहीं तो तुमको मिलना चाहिए बोलोगे तो राइट साइड में आओगे. The most important in spiritual progress is to attain satisfaction. If you constantly have thoughts that I have to attain something, then you will not be able to progress. जीवन में समाधान क्यों नहीं है? Why don't you have satisfaction? क्या मिलना चाहिए? What are you searching for? मिला तो है लेकिन और इच्छा हो जाती है. गुरुदेव क्षमा कीजिए. She said, I have gotten a lot, but I still have wishes. क्या? मिला तो है लेकिन फिर भी इच्छा हो जाती है. ये इच्छा है तो अपन ऊपर जाएंगे तो भी नहीं खत्म होगी. These desires, these wishes will not end even when we die. और दूसरा जितनी पूर्ण करोगे दूसरी फिर खड़ी होगी. The more you fulfill these wishes, the more दूसरा एक wishes बताता you will हूँ, get. जल्दी से सुधर जाओ नहीं तो बिगड़ने की चांसेस है. And I am telling you that become better, otherwise you have your chances of getting worse. इनको बता रहा हूँ नहीं, आपको सबको बता रहा हूँ. एक्चुअली अगर आपने अतृप्ति का भाव तुम्हारे अंदर रखा तो कुछ दिनों के बाद में अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो जाएगा. So I'm not just telling her, I'm telling everyone present here that if you continue to harbor the feelings of dissatisfaction within you, then a stage will be created over time. जैसे अपन एखादे नाट्यगृह में देखते हैं कि नहीं, एक स्टेज बना रहता है और उसके फिर ड्रामे बदलते रहते रोज. So when we go to the theater, there is a stage. The act keeps changing on the stage, but the stage remains. तो सदैव ना अपने विचारों का अध्ययन करो. So always observe your thoughts. अगर आपको ऐसे विचार आ रहे हैं मिलना चाहिए ऐसे आ रहे हैं क्या? Do you get thoughts that I should get this, I should get this, I should get this? तो समझ लो धीरे धीरे आपके अंदर अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो रहा है. So just imagine, then understand that gradually the stage of dissatisfaction is being created within you. देखिए जैसे आपको स्कूटर लेने की, मेरे को स्कूटर चाहिए, स्कूटर लेने का है, ऐसा 2-3 साल तक कंटिन्यू चलता रहा. So imagine you are thinking that you want to buy a scooter, that I want to buy a scooter, and it goes on for 2 or 3 years. तो 3 साल के बाद में आपने बैंक लोन लेके स्कूटर ले भी लिया. So say that after 3 years you took a loan from the bank and you bought a scooter. लेकिन ये 3 साल में आपके भीतर एक अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया. But in those 3 years, the stage of dissatisfaction has been developed within you. तो स्कूटर मिलने के बाद में भी समाधान नहीं होगा, फिर आपको लगेगा मारुति कार चाहिए. So even after getting the scooter, you will not be satisfied. Then you will say, okay, now I want to buy a Maruti car. I want to buy a car. और मारुति कार मिलके भी तृप्ति नहीं होगी, फिर मर्सिडीज चाहिए. And when you buy a Maruti car, then you will still not be satisfied. Then you will want a Mercedes. यानी आपके अंदर अगर अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो गया तो उसके ड्रामे बदलते रहेंगे, स्टेज वैसा का वैसे रहेगा. So if the stage of dissatisfaction is created within you, then the dramas, the acts will continue to change, but the stage will remain. तो इसलिए सदैव याद रखो अपने अंदर कोई स्टेज तो निर्माण नहीं हो रहा है, ये देखो. So always observe and analyze for yourself that is a stage being created within me. तो एक ही प्रकार के विचार अगर हमको कंटिन्यूस खूब दिनों तक आते हैं ना तो उसका एक स्टेज निर्माण हो जाता है. फिर स्टेज से मर जाएंगे लेकिन उसमें से मुक्ति नहीं. So if there is a one type of thought that continuously comes in your mind, then just imagine, then understand that the stage will be created, and then even if we die, we will die, but the stage will not go. तो अतृप्ति का स्टेज निर्माण मत होने दो अपने लाइफ में, ध्यान रखो अपने तरफ. So do not allow that stage of dissatisfaction to be created in your life. Be aware of it. और दूसरा ये अतृप्ति का नहीं, आज्ञा का भी रहता है. It's not just for dissatisfaction, it is also of the agya. जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी करते समय किसी सहकारी के साथ आपका गुस्सा है, नाराजी है, उसका मुंह देख के आपको गुस्सा आता है. It also happens at the agya chakra. So for example, if you are in a government job and you have came into contact with someone and you had a conflict and then you got angry. और विचित्र कंडीशन है क्या, नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, वो सहकारी को सहन भी नहीं कर सकते. So you're in such a situation that you cannot even leave your job, but you're not also getting along with this colleague. तो ऐसा खूब दिन तक रहा तो क्या होगा, आज्ञा चक्र का स्टेज निर्माण हो जाएगा. So and then it goes on for many days. Then what will happen is that the stage will be created at your agya chakra. फिर आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, आप दूसरी जगह आओगे, फिर किसी सहकारी को ले आओगे स्टेज पे. So then you may be transferred to a different post, and over there you will bring on someone else onto this. तीसरी जगह जाओगे, फिर किसी को ले आओगे. And then you will move to a different place and you will bring someone else on this stage. यानी आपके आज्ञा चक्र में कोई ना कोई सदैव बैठा ही रहेगा.
meaning that there will be someone or the other at your Agya Chakra, the और stage at your जीवन Agya भर Chakra. आप किसी न किसी से परेशान होते ही रहोगे. And for the rest of your life, you will be disturbed by someone or the other. तो कहने का प्रकार है कि एक ही प्रकार के विचार अपने अंदर कभी मत आने दो. अगर ऐसे आ रहे हैं तो एकदम अलर्ट हो जाओ और सतर्क हो जाओ कि ये बंद होना चाहिए. So what I'm trying to tell you is that do not allow the same type of thoughts to come into your mind again and again. If they are coming, then become alert and analyze them. कभी भी स्टेज निर्माण हो गया ना, फिर निकलना उसमें से बहुत कठिन है. Because once the stage has been created, then it is very difficult to get rid of it. तो आपके अतृप्ति के विचार पे आप कंट्रोल करो, नहीं तो फिर वो अतृप्ति का स्टेज निर्माण हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं निकलेगा जिंदगी. So control these thoughts of dissatisfaction, because once the stage has been created, it won't be going anyway. So stop it right now. एक्चुअली मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आता है ना, पहले मैं देखता हूँ आध्यात्मिक प्रगति में इसमें क्या बाधक है. तो तुम्हारी बाधक है अतृप्ति का भाव, उसको निकालो तभी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है. So whenever someone comes in front of me, the first thing I check is that what is causing an obstacle in this person's spiritual progress, and the obstacle in your spiritual progress is the feeling of dissatisfaction. और दूसरा बीच में रहो ना, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती. So stay in the middle, that if I get this, then it's okay. If I don't get it, then it's also okay. Just stay in the middle. मिलना ही चाहिए भाव रखोगे तो फिर वो स्टेज निर्माण होगा. But if you maintain the feeling that I must get this, then the feeling of dissatisfaction will develop within you. ठीक, नेक्स्ट. Next question. This is last question, please. ये आखिरी सवाल होगा स्वामी जी. टाइम हो गया बोल रहे हो. जल्दी से पूछ लो, जल्दी से उत्तर देता हूँ. टाइम हो गया. Please ask in short, very quickly, because we have come to the end of our program. जय बाबा स्वामी. मेरा और कई साधकों का अनुभव होता है कि मन में कोई सवाल बहुत दिन से चल रहा होता है और ऐसा होता है उसका स्पष्ट जवाब सपने में स्वामी जी के स्थूल शरीर से मिलता है. तो ये जो प्रक्रिया है वो बुद्धि के स्तर पे है या फिर हमारी आत्मा का आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ाव है, इसके लिए होता है? नहीं, ये सूक्ष्म शरीर के कारण होता है और सूक्ष्म शरीर का प्रत्येक से व्यक्तिगत संबंध है. So her question was that sometimes, and many people will have this. Many people will have this, that sometimes they have many questions in their minds, and sometimes that in their dreams they will see Swamiji's presence, and they will get an answer. And so why does this happen? Does this happen because of our connection with the subtle body? And Swamiji is replying that yes, it happens because of the subtle effects of the subtle body, and every individual has a special connection with the subtle body. जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, गंगा का पानी गंगा में जितना शुद्ध है उतना ही बॉटल में शुद्ध है, उतना ही लोटे में शुद्ध है. So just as I explained that the water in the river Ganga is just as pure in the river as it is pure in the bottle or in the vessel. दूसरा आज थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ. एक्चुअली अनुभूति जो होती है ना, वो सूक्ष्म शरीर से होती है, मैं कुछ नहीं करता. And I will clarify something today, that I am just a medium. Whatever the spiritual experience you get it because of the subtle body. तो अनुभूति के माध्यम से सूक्ष्म शरीर अपना प्रत्येक अंश आपको देता है. So through the spiritual experience, the subtle body gives a part of itself to you. तो प्रकृति का संबंध ऐसा है कि सूक्ष्म शरीर का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग है, सेपरेट. So it is nature that the subtle body has a connection with each one of you. इसलिए कोई भी साधक बड़ा नहीं है, कोई भी साधक छोटा नहीं है, सब एक जैसे. It is equal and unique for each sadhak, each person. So no sadhak, no person is bigger or smaller than the other. They are all equal. वृक्ष के प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई रहती है. It is just that every seed has the potential to become a tree. सिर्फ उसको लुक आफ्टर वैसा होना चाहिए, तो वो भी वृक्ष है. It just needs the suitable environment and it has to be looked after in the right way, and it will become a tree. ठीक. Okay. गुरुदेव, आपकी अनुमति है तो आगे बढ़े कार्यक्रम में. आगे का कार्यक्रम करें, अनुमति हो आपकी तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. क्या कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. तुम दोनों बोलोगे तो कुछ भी सुनाई नहीं आएगा. मेरे को कान दो ही है ना, एक जन बोलो ना. गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं, आपकी अनुमति है तो कार्यक्रम में. करो. On behalf of everyone present here, we would like to extend heartfelt gratitude to His Holiness
Shivkrupanand Swamiji for his valuable spiritual guidance, for a blissful, peaceful meditation session, and for addressing all of our questions in such an easy to understandable way. मेरे को लगा था प्रोग्राम का टाइम आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं खुश हो रहा था, तो देख के यहाँ उपस्थित सभी की ओर से आज के बहुमूल्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ध्यान के लिए परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का कोटि कोटि आभार. We would also like to thank, yes, we can clap and then we can move forward. We would also like to extend our heartfelt gratitude to Her Holiness Guru Ma, who has been the constant support in Swamiji's spiritual journey and a strong pillar to lay the foundation of Himalayan Samarpan meditation, which is now practiced across 70 countries worldwide. स्वामी जी की आध्यात्मिक यात्रा में और हिमालयन समर्पण ध्यान के विश्व भर के 70 से अधिक देशों में प्रगति में परम पूज्य गुरु माँ का सबसे बड़ा सपोर्ट आधार रहा है. हम सभी की ओर से परम वंदनीय गुरु माँ का ढेर सारा आभार. So the event that you all witnessed today, this evening, this is an extension of a 3-day festival that we call Chaitanya Mahotsav, which on 8th of November, it marks the birthday of Swamiji, and yesterday was the 70th Jubilee celebration of Swamiji. So this 3-day event was celebrated by more than 300 people from 14 countries who visited here in person in Singapore, and across the world, people were watching live on YouTube, which is what Swamiji referred to, that he mentioned in the discourse. So if you would like to look at the discourse, it's also available on the YouTube channel, Gurutattva, Gurutattva. Swamiji's discourses are available on that channel as well. आज का कार्यक्रम 3 दिवसीय चैतन्य महोत्सव का भाग था, जिसमें 14 देशों से 300 से अधिक लोग सिंगापुर आए और ऑनलाइन यूट्यूब से विश्व भर से हजारों लाखों लोग जुड़े हुए. सभी अटेंडीज को ढेर सारा आभार. This event has been possible because of the support and the donations from a lot of people, from a lot of organizations. So a heartfelt gratitude for all your continued support, your donations to make this event a grand success. और इस कार्यक्रम के सभी सपोर्टर्स और सभी डोनर्स जिनकी सहायता से चैतन्य महोत्सव 2024 सक्सेसफुल हुआ, सभी का खूब खूब आभार. To the amazing volunteers who made this event possible, for all their exceptional love and the dedication that they made this possible, we thank you, all the volunteers, for making this an exceptional event. सभी volunteers, सभी स्वयंसेवक का दिल से आभार. And finally, to each and every one of you, सब जो यहाँ उपस्थित है, आज का कार्यक्रम जैसे इस चैतन्य महोत्सव को चेरी ऑन टॉप है. आपकी उपस्थिति के लिए खूब खूब आभार. We have a very short message from the organizing team. I'll read that in English and I'll translate in Hindi. So this is from the organizing team. Although the event was held in Singapore, it was organized with support from sadhaks, volunteers from various countries, making this Guru Karya, the Guru's work, an international effort in a very short time. With the joy of carrying out this Guru Karya, we accept that we are humans and we humbly apologize for any mistake or any inconveniences that happened. We also thank all the practitioners who made an effort to reach this celebration and join the celebration. And finally, the organizing team would like to thank Swamiji and his entire family for making the journey to Singapore and hosting the event here. We pray and wish that everyone felt the grace of Chaitanya in this event. This was the message from organizing team. हिंदी में ये करता हूँ. गुरुदेव, organizing team के से एक message है
कि भले ही इवेंट सिंगापुर में अटेंड किया हो, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया हो, लेकिन ये मुमकिन हुआ इंटरनेशनल एफर्ट बाकी कंट्रीज के साधकों की गुरु कार्य की वजह से। हमें आशा है कि उस गुरु कार्य के आनंद में सभी को मजा आया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हर कोई साधक जो सिंगापुर यहाँ पहुंचा, हम उन सभी का तहे दिल से आभार मानते हैं और स्वामी जी और उनके पूरे परिवार का सिंगापुर आने के लिए और यहाँ इवेंट में होस्ट करने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम ये आशा करते हैं और हम ये प्रे करते हैं कि आप सभी को इस इवेंट के माध्यम से वो चैतन्य महसूस हुआ। धन्यवाद। ये था मैसेज ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से। Thank you, everyone. We will now remain seated and quiet in our places. सभी अपने अपनी जगह बैठे रहेंगे शांति से। अब स्वामी जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। We will all remain seated as we have. Thank you. As Guru Ma leaves the stage, अब गुरु माँ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। Let us all remain seated. We have a few very quick announcements. So all those who joined us here today, we hope you truly enjoyed the session. We hope you were truly able to absorb the guidance, the energy, the vibrations that Swamiji has shared here with all of us. And once again, thank you so much for being here. Now, like Swamiji mentioned, Swamiji has sowed the seed, and now for the tree of spirituality to grow, Swamiji the team in Singapore will be hosting a special workshop which is for 45 days for the team, and you see the QR code on your screens. So everyone who has registered for the event will receive the details about this via email. If for some reason you have missed it,